Hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और yes, बहुत सारे ट्रांसफर स्टोरीज तो है ही, वो तो हम आने ही वाले, बट द वीकेंड इज क्लोज और इट्स रियली अ बिग वीकेंड मेरे लिए बिकॉज देयर आर व्हाट 3 एक्साइटिंग टाइज. और मैं आऊंगा उस पर कौन से 3 एक्साइटिंग टाइज. यू लेट मी नो चैट भाई, आप लोग के लिए कौन सा एक्साइटिंग प्राइज है. और काफी सारा हिस्ट्री, some kind of real out of form teams जो जहां पर भिड़ेंगे, काइंड ऑफ ब्रैगिंग राइट्स, बहुत सारा बात करेंगे. इसलिए हम ला रहे हैं वन ऑपोजिशन फैन एज वेल टुडे इन द पैनल. होपफुली दे जॉइन अस इन अ फ्यू मिनट्स. लेकिन उससे पहले बिग अप भाई सब लोग जो भी है, थैंक्स फॉर जॉइनिंग एंड ऑफ कोर्स डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. होपफुली भाई इस वीक फाइनली 5K हो जाए भाई सब लोग. कम ऑन, लेट्स गेट अस टू 5K. वो कैसे होगा? आप लोगों को सबको लाइक ठोकना है पहले तो, सो दैट मोर पीपल कम. Of course, lot of content coming on both the channels, so do check out both the channels. But also हो सके तो please like our community posts, our Instagram posts जहां पर हम किए as always. और हाँ, यहाँ पर मैं देख रहा था, हाँ कमेंट्स में देख रहा हूँ ऑलरेडी. काफी भाई एडिट नहीं करूंगा बिकॉज मैं अभी तक आई एम स्टिकिंग टू व्हाट आई सेड यस्टरडे कि दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. यस, maybe यार कैसेमिरो might be interested in new challenge, लेकिन why would he go to United? हाँ, मे बी they'll double his salary, जो भी यार. आई स्टिल फील नहीं होने वाला. मे बी आई एम प्रूवन रॉन्ग. हाँ, यस, आई नो लॉट ऑफ रिपोर्ट्स बोल रहे दैट ही इज एक्चुअली लुकिंग एट इट एक्सेट्रा, लेकिन इवन चेल्सी आर इंटरेस्टेड पीपल. लेट मी टेल यू दैट. तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है एब्सोल्युटली. लेट्स सी, मतलब हो सकता है ही इज एवर क्लोजर देन एवर, बट अगेन रेलेवो आधे 100% राइट ऑल द टाइम नहीं. आई रियली फील दैट रियल मैड्रिड के लिए अभी बहुत लेट है टू काइंड ऑफ रिप्लेस कैसेमिरो. दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील. अगेन आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन हाँ, अगेन बिग अप टू फुटबॉल क्रीक्स, अद्वे एज वेल. एब्सोल्युटली थैंक्स दिव्यांशु एज वेल. यस बिल्कुल. एंड बैंग बैंग, चेल्सी ब्लूज, एलेक्स जॉनसन, दानिश इकबाल, सैकत दास, मैन सिटी फैन आल्सो इज हियर. चलो नाइस एवरीवन भाई सब लोग. अगेन लाइक ठोक दीजिए. डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द स्ट्रीम ऑन सोशल मीडिया अगर हो पॉसिबल. ब्रिलियंट रहेगा. यू कैन ऑलवेज लाइक आवर पोस्ट एज वेल ऑन सोशल मीडिया. तो यहाँ पर लेट्स कंटिन्यू. यस, कहां से शुरू करें भाई? यहाँ क्रेजी नंबर ऑफ फिक्सचर्स है इस वीकेंड. यस ऑफ कोर्स प्रीमियर लीग से शुरू करेंगे. प्रीमियर लीग ऑन, हाँ वी विल ट्राई एंड कम टू अदर लीग्स एज वेल. प्रीमियर लीग में देयर आर सम हिस्टोरिकल टाइज ऑफ कोर्स, और यस यू कैन आल्सो पुट इन प्रेडिक्शन. यहाँ पर आपको मिलेगा लॉट ऑफ एफपीएल के लिए भी कंटेंट, क्योंकि यस वी विल बी डिस्कसिंग विद यू कौन अवेलेबल होगा, कौन नहीं अवेलेबल होगा, हु विल प्रॉब्ली प्ले, हु विल प्रॉब्ली नॉट प्ले, tactics, or not just that, of course transfer stories around that club जो भी हम बात करने वाले in terms of the fixtures, right? तो सबसे पहले I have to start with my club. Yes, I'll come to Manchester United, Liverpool, the big fixture. Of course Newcastle City भी बड़ा fixture in my opinion, because it's, आप बोल सकते हो in a way oil money derby. You can say that now. Come on, let's get real about it. As much as both are doing really well, लेकिन हाँ, we have to start with of course Chelsea. भाई Chelsea के लिए बहुत बड़ा गेम है. Why? Because one, last weekend हमने स्पर्स के साथ we played and we had what a tremendous game. I must say it was a tremendous game, but not just about a game. I think it was like एक मतलब इनथू देखने को मिला, like that Chelsea element that they play for the badge, वो देखने को मिला. Yes, it was against Spurs, so motivation की जरूरत नहीं थी, लेकिन at the end of the day we didn't get a great result. Yes, it was 2-2, and that is why against Leeds it's even more important कि एक है, it's an away fixture. Yes, फर्स्ट अवे फिक्सचर हमारी डिफिकल्ट थी अगेंस्ट एवर्टन. वी काइंड ऑफ टैकल देम 1-0 लिए, लेकिन नाउ लीड्स है व्हिच इज आवर ट्रेडिशनल राइवल. फॉर दोज ऑफ यू जो नहीं जानते भाई, लेट मी टेल यू. और यहाँ पर क्यों, यस आई नो काफी लोगों को लग रहा होगा दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड लीड्स हैज टू बी द बिगेस्ट राइवलरी इन टर्म्स ऑफ लीड्स का राइवलरी. नहीं, आई थिंक इट्स बाय फार चेल्सी. That's my opinion. Again, you can correct me if I'm wrong. Yes, geographical rivalry है वहां पर. देखिए यार, the most, and I literally mean it, the most brutal match in British football history has been played between Leeds United and Chelsea. वो था 1970 को, और वहां पर ब्रूटल था. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मैचेस थे. इट वाज अ रीप्ले ऑफ द एफए कप फाइनल. इट वाज द फर्स्ट एफए कप विक्ट्री ऑफ चेल्सी. ठीक है, वहां पर इट वाज अ ह्यूज काइंड ऑफ अ ओकेजन जहां पर लीड्स वर आल्सो देयर, चेल्सी वर देयर, और so many. I think it was the most viewed match as well. After the 1960s World Cup, it was the most viewed match as well. तो वहां पर crazy number of tackles went through on the pitch. Not just that, उस दौरान क्या हुआ करता था, people used to stand, in the stands, they used to stand. तो वहां पर a lot of fights
went on as the match was going on, and that is known. और फिर replay हुआ, and replay में we came back from behind, as Chelsea came back from behind and beat them 2-1, और फिर मारधाड़ शुरू होगी वापस से crowd में. और not just that, players were literally hitting each other, whatnot, मतलब crazy number of tackles, बहुत ही गंदे conditions थे. And like I said, most viewed match in history of football in Britain after the 1966 World Cup final, जो जीती थी England of course, but not just that, the most brutal match it's been tagged. और उसके बाद लीड्स, they were coming in, going out of the Premier League always. यार इतने सारे मैचेस हुए. Everyone will remember last year क्या हुआ था. थोड़ा सा मैं रिफ्रेश करना चाहूंगा मेमोरी फॉर पीपल हु डू नॉट नो. भाई Chelsea have got the better of Leeds. Last 5 fixtures में we have beaten them 4 times, but हाँ एक ड्रॉ हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो था एलन रोड में वहीं पर है मैच. लेकिन लास्ट ईयर फर्स्ट मैच आपको याद है, इट वाज अ 3-2 विक्ट्री फॉर चेल्सी इन द डाइंग सेकंड्स, और वो हुआ था विया अ पेनल्टी ऑफ जॉर्जिनियो ने मारे थे 2 पेनल्टीज. लेकिन मोर देन दैट, द वे दैट पेनल्टी वाज वन बाय रूडिगर, यस रूडिगर वाज देयर, और वो शिट हाउस जो था, एंड लिटरली आई रिमेंबर जेलाट, लीड्स के यंग स्ट्राइकर, scored in the 83rd minute, and then Rudiger came and won a penalty in stoppage time. और वापस से लड़ाई झगड़ा शुरू. और दैट इज सेइंग व्हाट लीड्स एंड चेल्सी मैचेस आर. एंड नॉट जस्ट दैट, आपको याद है तो ड्यूरिंग लैम्पार्ड्स रेन इट यूज्ड टू बी लॉकडाउन, एंड लॉकडाउन के बाद में ऑलमोस्ट लॉकडाउन खुल रहा था, एंड देन सर्टेन पीपल वर अलाउड इन द स्टेडियम. ये था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टैमफोर्ड ब्रिज में था. वी बीट देम 3-1, जीरो स्कोरिंग. आई रिमेंबर दैट वेरी वेल. व्हाट अ गेम. नॉट जस्ट दैट यार, चंद लोग थे बस, लेकिन एटमॉस्फेयर, वाओ, what an atmosphere. इसलिए this game is kind of, you cannot miss on this Sunday, absolutely. और यहाँ पर हाँ मैं quickly बोलना चाहूंगा, यहाँ पर काफी लोग doubtful है. Quickly let me big up a few more people in the chat. Pratik, big up भाई, मतलब how are you? And yes, I'm coming to the chats as well. अरे Rene, how are you? Nice to see you always. Ayush in the house as well. Okay, Vishnu, Nipun, R9, Adesh. चलो काफी लोग आ गए. Yes, and I'm going to come to comments as well. Just give me a few minutes. Quickly मैं यहाँ बता देता हूँ, for people playing FPL especially, आप लोग के लिए है ये mainly. भाई काफी लोग आउट है लीड्स के लिए. लीड्स के लिए आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एलिंग इज आउट, जो लास्ट सीजन फर्स्ट मैच में बढ़िया गोल मारे थे. डायलस इज आउट, फर्पो इज आउट. हाँ फर्पो तो ऐसे भी खेलेंगे नहीं, बट एनीवे डायलस एंड एलिंग आर बिग काइंड ऑफ मिसेस फॉर देम. और नॉट जस्ट दैट, चेल्सी के लिए भी आई थिंक कांटे विल बी आउट एंड कोवाचिच विल बी आउट. क्या कांटे थोड़ा सा डाउटफुल बोल रहे हैं, लेकिन कम ऑन, आफ्टर हैमस्ट्रिंग मुझे नहीं लगता है कांटे इज कमिंग बैक, एंड कोवाचिच का नी इंजरी है, इतने जल्दी नहीं आने वाले, पता है वो. और स्लाइट डाउट्स भी है लीड्स के. यस मैंने डाला है बैमफोर्ड को, एक्स चेल्सी मैन, इन द थंबनेल भाई, लेकिन वो स्लाइट डाउट है. हाँ ही इज लिटिल बिट इंजरी रिडन, लेकिन इन माय ओपिनियन भाई अगेंस्ट चेल्सी वो तो खेलेंगे. ही विल प्ले. जेलहार्ट, द पर्सन हु स्कोर्ड लास्ट सीजन के फर्स्ट मैच में, ही इज आल्सो स्लाइट डाउटफुल. और कूपर, उनके if I'm not wrong captain, he is also having a slight doubt, but again it's a big game, Leeds Chelsea, so I'm pretty sure वो लोग खेलेंगे. और यहाँ पर quickly मैं आ रहा हूँ. There are 2 matches of City in one weekend. Can you see? Okay, चलो यहाँ पर भी स्टार करो आयुष. Coming back, I'll come to the City game as well. Bruno Guimaraes, yes, ये मैंने सुना है. But again, Bruno Guimaraes literally भाई last season आए थे Newcastle United. If Newcastle want to sell, then I don't think they're going in the right direction. I know money talks, लेकिन I don't think it's going. मेरे लिए weak है. That's, I'm sticking to that. Just my opinion by the logic. Okay, yes, बिल्कुल. ये मैं mark करके रखता हूँ मानव. Thanks. Okay, get Oba. Yes, talking about Chelsea. Okay, where are Chelsea placed? हाँ, हमने injuries के बारे में बात कर लिया है. But what about the transfers? Yes, the latest news for Chelsea fans out there जो wait कर रहे हैं, is that ओबामियांग के साथ पर्सनल टॉक्स हो गए हैं. ही हैज अग्रीड पर्सनल टर्म्स, जो फोफाना के साथ भी हो गए वहां पर. लेकिन डिफरेंस इज दैट फोफाना आई डोंट थिंक हैज कन्विंस लेस्टर टू काइंड ऑफ एक्सेप्ट चेल्सी का जो बिड होने वाला है अराउंड 80+5 मिलियन. तो ऑन द अदर हैंड ओबामियांग, यस जावी अभी तक बोल रहे हैं भाई मुझे चाहिए ओबामियांग, क्योंकि यहाँ पर डिपाए जाने वाले हैं, तो आई कैन नॉट अफोर्ड बोथ टू गो. लेकिन एज पर रिपोर्ट्स देयर इज अ हाई चांस दैट ओबामियांग माइट जस्ट एक्चुअली as in Barca might accept it. अगर Chelsea करने वाली है bid around 30 million. So I think if I'm not wrong, 30 million euros, which is about 25 million pounds, is what they wanted. So as per reports, we might just go for it. How are you all thinking about it? हाँ, no CR7 please. कोई लोग बोल रहे हैं, कोई लोग बोल रहे हैं no Oba please. मतलब मुझे लग रहा है I am in the CR7 बस, कि मुझे लगता है CR7 would be better off in Chelsea. Aubameyang is probably a
शॉर्ट टर्म और वो भी बैगेज लाएगा, तो बेटर गेट CR7 अगर दोनों ही बैगेज ला रहे हैं, राइट? ऑफ कोर्स CR7 इज गोट एज वेल, तो इट हेल्प्स इन स्कोरिंग, बेटर फिनिशर, वो मेरा आर्गुमेंट है, बट अगेन Tuchel, he's played with him, he knows the best. Anyway, Chelsea had a great time. Didn't expect they would play so well. I was expecting a beating from Spurs. नहीं यार निपुण, वही है ना, मीडिया भाई, मीडिया रिएक्शनरी होती है, फैंस रिएक्शनरी होते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। एक गेम हो गया स्पर्स का 4-1 जीत गया अगेंस्ट साउथहैम्पटन, और सोचने लगे भाई दे आर बेसिकली रियल मैड्रिड ऑफ द वर्ल्ड। भाई नहीं है, let's get real, they are not, they are still building their team. It's not easy to kind of play that level, and Conte's team again takes time to kind of gel, but once they do, they play really well. I understand that. Okay, people, come on, let's get the likes in भाई, सब लोग like कर दीजिए, like से और लोग आएंगे। और वैसे ही I think if I'm not wrong, Anshumaan has also joined us, so we will be moving on to Manchester United in just a few minutes. Before that, I'll take the neutral opinion यहाँ पर। अंशुमान क्या हाल है भाई? बढ़िया भैया, आप कैसे हो? बिल्कुल। अरे सब बढ़िया भाई, ऑल ऑल गुड, एंड पीपल डू चेक आउट द यूनाइटेड रोड। बाय चांस आपने नहीं किया अभी तक, क्या कर रहे हो भाई? प्लीज डू चेक इट आउट एंड डू सब्सक्राइब एंड आल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन ऑल चैनल्स, आई वुड से। देखिए यार, नो नोटिफिकेशन काइंड ऑफ सरप्राइज देरिन, क्योंकि मैं, काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया, मैं खुद ऑलमाइटी स्पोर्ट्स, हाँ, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस से मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे तो आई है नोटिफिकेशन खुद, तो आई एम काइंड ऑफ वियर्ड, सम पीपल आर गेटिंग, मैंने यूट्यूब में भी, मैं आई हैड कंप्लेन बट दे आर सेइंग नो इट्स वर्किंग फाइन, तो आई डोंट नो, मे बी यू माइट वांट टू हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकन वंस मोर फॉर ऑल नोटिफिकेशंस, वही मैं बोल सकता हूँ। लेकिन बिग अप डेरेन, मेंबर ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी। यहाँ पर काफी काफी, अरे थैंक्स यार आकाश। यहाँ पर अंशुमन से पूछ लेते भाई। अंशुमन, मैं वही बात कर रहा था, किसी, आई अंडरस्टैंड दैट कॉन्टे ब्रिंग्स अ यूनिटी इन द टीम, ही ब्रिंग्स दैट डॉगडनेस, ठीक है, लेकिन यार आपको नहीं लगता कि एक मैच के बाद द मीडिया एंड फैंस काइंड ऑफ स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट स्पर्स दैट दे आर द नेक्स्ट रियल मैड्रिड? मतलब थोड़ा ओवर रिएक्शन नहीं था? ना चेल्सी ने दिखा दिया उनको क्या, मतलब परफॉर्मेंस की चेल्सी ने। भैया मैं देखो, वही है कि कॉन्टे कॉन्टे प्लेज अ सर्टेन प्लान, ठीक है। उसके पास प्लान ए इज वर्किंग रियली फाइन, ठीक। प्लान बी के नाम पे यू हैव रिचार्लिसन, तो स्टिल डोंट हैव दैट डेप्थ which Chelsea got, or someone like City, Real Madrid, Bayern Munich, those teams have. So you can talk about winning the PL, or winning the CL, वो होने नहीं वाला, ठीक है। Even if you go out and get Conte someone like FA Cup or Carabao Cup, that's basically that hoodoo of not winning anything for almost like what 11-12 years, that Yeah. would just go out of the window. Last was Carabao Cup, ठीक है, वो कार्लिंग कप था तब वो जीते थे। So if that hoodoo even he can break, that would be like much needed confidence even for the Spurs fan. As Spurs fans, they can believe that all right, what, we have taken the first step. When you talk about Premier League, it's not gonna happen. It's just not gonna happen because you don't have that depth. You have one injury to someone like Harry Kane or Heung-min Son, and you will be asking for answers. And you don't have one. कोई उसके आसपास का भी क्वालिटी प्लेयर नहीं है who can just come out and take the game by the scruff of the neck. ठीक है, रिचार्लिसन he can play a certain role, उसका एक certain style है अपना खेलने का. He can be very rough, he can be very rigid, he can be a pain in the ass for the opposition. But is he a 20 goal player? No, he's not. वो 20 गोल आपको नहीं देगा सीजन के, which Harry Kane will give you like in his sleep. ठीक है, वो शुरुआत भी अगर स्लो करता है, he can easily catch up. He has already started. लोग बोलते हैं ना, he starts very slowly. Now he has already started. Unfortunately for you guys, it came against you, but he has already started. नहीं, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपना तो यार एंथनी टेलर भी था ना, दे वर प्लेइंग विद 12 men, तो लेट्स गेट इट राइट वहां पर। I have seen, that game was absolute rubbish, like in terms of refereeing. मतलब वो, मतलब आई डोंट वांट, मतलब मैं तो यार उस पर ही रैंट कर दूंगा 2 घंटे, मतलब ट्रस्ट मी, आई वाज लाइक सो पिस्ड ऑफ। आई रिमेंबर दैट मुझे लाइव जाना था, लेकिन मैंने कैंसिल किया, और मैंने बोला नहीं, लेट मी काम डाउन, मैं क्या बक दूंगा पता नहीं इस गुस्से में। मतलब मैं लाइक नो वे मैन। लेकिन यार अगेन पीपल आर अगेन काइंड ऑफ अग्रीइंग दैट वही ओवर रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ फुटबॉल, एंड वी हैव टू बी अग्रीइंग एट द सेम टाइम। आई अग्री दैट वंस एक सेटल हो जाती है टीम, तो वो एक डॉगडनेस लाता है वो टीम में, जो वी कैन नॉट डिनाई, और वो है, इट टेक टाइम, इट्स नॉट देयर येट। Conte is toxic at the same time, yeah. वो ही है, there are two sides of the coin, like Richarlison is a brilliant example. तो in a strange sense दोनों ही बेसिकली लड़ पड़ेंगे एक दिन, मुझे तो लग रहा है, लेकिन अभी के लिए एक और चीज it makes sense. कि when you talk about Conte, all of a sudden winning PL और CL, तो Conte के पास पर्स से
when it comes to having the players, twice the quality of players he had with Chelsea. ठीक है, even with Inter he had like really good squad. ठीक है, but when you look at Conte, he is not bothered about UCL. That's the first thing. ठीक है, उसको UCL से फर्क नहीं पड़ता. He is always been a domestic. उसको उसको सिर्फ चाहिए कि भाई वो लीग जीतता रहे बंदा. He बिल्कुल always tries बिल्कुल for the league. That's what he did with Chelsea as well. Chelsea का भी देख लो, with Inter वो तो भाई नीचे ही आ गया, मतलब वो तो अगले राउंड में भी नहीं जा पाया. थर्ड या फोर्थ आया था वो अपने ग्रुप में. सो ऑब्वियसली दो साइड्स हैं. अभी एक दो गेम के बाद स्पर्स को अगर तुम पीएल चैंपियन बना रहे हो तो भाई फिर मैं क्या बोलूं. नहीं नहीं मतलब अच्छा करेगी. आई हैव टू से दैट इवन आर्सेनल व्हेन विल कम टू दैट गेम बाय गेम एंड ऑफ कोर्स अंशुमन यहाँ पर तो मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल तो यार द बिग गेम की बात करेंगे, लेकिन अभी वी आर स्टिकिंग टू चेल्सी फॉर द टाइम बीइंग फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. और अगेन पीपल यार मैं सुन रहा हूँ भाई काफी कम लाइक्स हुए. लेट्स लाइक द स्ट्रीम भाई, वो बैटरी होती है, वो ये खाना होता है स्ट्रीम के लिए, उससे बेसिकली गाड़ी आगे चलती है. तो इट्स नॉट जस्ट फॉर मी, इट गोज फॉर एवरी स्ट्रीमर आउट देयर. तो प्लीज एग्जैक्टली. प्लीज हिट दैट लाइक बटन. एज सून एज आप कर जाते हो जस्ट टेक्स अ बटन, और कुछ नहीं. मतलब और सब्सक्राइब भी कर दीजिए because we are very close to 5k and let's get even Anshuman there as well. That's the United Road. चलो यार यहाँ पर मैं क्विकली मैं लाइनअप शेयर करने वाला हूँ और यस ट्रांसफर स्टोरीज पर भी आएंगे वापस से. लेकिन देखिए आई नो दैट लीड्स टॉकिंग अबाउट फॉर्म, भाई लीड्स ने एक्चुअली अच्छा किया था साउथहैम्पटन के साथ. दे इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे स्कोर्ड 2 अर्ली गोल्स. रोड्रिगो इज इन फॉर्म, लेकिन दे आर बेसिकली टीम जो कंसीड भी करती है. आई नो दैट एज अ फैक्ट. तो वहां पर मे बी वी हैव एन अपर हैंड, बट लेकिन एज ऑफ नाउ देव गॉट व्हाट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 विन एंड अ ड्रॉ. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड रिजल्ट. वुल्व्स और साउथहैम्पटन है यस, बट प्लेइंग एट होम आई थिंक वी हैव टू बी केयरफुल क्योंकि उन्होंने काफी अच्छे साइनिंग्स किए. एंड यस दिस इज फॉर पीपल अगेन एफपीएल के लिए अगर देख रहे हो भाई, लीड्स एक अच्छी टीम इन्वेस्टमेंट है. हाँ इस वीकेंड के लिए तो नहीं, बट जनरली आई वुड से बिकॉज दे स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स. अब देखिए यहाँ पर हैरिसन, रोड्रिगो और एरनसन और बैमफोर्ड, ये जो चौगड़ी है ना, मतलब ये बढ़िया बेसिकली इंटरचेंज करती है. काफी काफी पेसी है. दे काइंड ऑफ हिट ऑन द ब्रेक एज वेल एज बेसिकली द प्रेस. तो यहाँ पर वी हैव टू बी केयरफुल. और मेन चीज जो क्या है ना अंशुमन, लीड्स ने ना देखो आप मिडफील्ड जो डुओ है ना एडम्स और रोका का, भाई दो ला दिए दो जर्मन मेंटालिटी प्लेयर्स बिकॉज दे कम फ्रॉम जर्मन लीग. और इट मेक सेंस टू काइंड ऑफ कीप देम क्योंकि जो डिफेंस थोड़ा सा वीक था ना, with them coming, do you think that Jesse Marsh has just got it right about Leeds, or ho sakta hai because of that Adams and Tyler Adams and Roca, they might just be able to get enough points this season and they might save the season? See, I have never been the moment they made their signings, I was in Mm-hmm. no doubt that they won't be even in relegation fight, like, ठीक है, unless or until they flops like badly. Last season they were in the struggle, they were struggling because of the fact that they didn't have anyone who could just come up for someone like Bamford. Once Bamford went out, they were struggling, and with the mindset that Bielsa played with, just keep on going. That's, you cannot succeed with that हाँ for a long क्योंकि time. थोड़ा सा pragmatism चाहिए एकदम. I agree with you Yeah, and like 100%. अभी आपके पास वैसा squad होना चाहिए. You don't have the squad of City that you can keep on, playing for attacking football like for 90 minutes. ठीक है, वो नहीं कर सकते तुम. Even you want to do it, you cannot do it. ठीक है, तो he kept on going, and उसके पास मतलब when he used to concede, वो उसके चेहरे पे दिखता था, what, we should just go out and get that next goal. और वो next goal के चक्कर में फिर गोल खाता था वो. Because he never told his players basically कि तुम रुक जाओ भाई, let the game settle a bit. तो ये दिक्कत थी उसके साथ. जैसे मार्च, इसको पता है कि भाई इसको भी सर्वाइवल के लिए फाइट करना है. वो उस तरीके के प्लेयर उठा के लाए. रॉका, एडम्स, बोथ आर वेरी रिजिड माइंडेड. उनको पता है कि उनको मिडफील्ड में क्या करना है. पैर वैर पे मार दो, टैकल वैकल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस बॉल जीत लो या गेम को स्टॉप कर दो फॉर द टाइम भी. एंड उनके पास इतने बुरे डिफेंडर्स नहीं है. दे हैव एडेड गुड स्क्वाड डेप्थ. ऑन रॉड्रिगो अगर फॉर्म में है, इफ ही इज एडिंग अप टू व्हाट बैमफोर्ड कैन डू अप फ्रंट, वो मतलब आपको आराम से और 12-15 गोल. एरिक्सन भी अच्छा लगा यार, मतलब सॉल्जबर्ग के साथ हियर वेरी गुड सीजन लास्ट सीजन. तो या मतलब मैं वी वही हैव टू बोल बी रहा केयरफुल ऑन द ब्रेक. हूँ. So they have added really nicely. They have बिल्कुल. added, कोई senseless signing नहीं है. Everything adds हम्म. up what the manager wanted. और वो सारे, उनका midfield देखो, उन्होंने सबके ऊपर upgrade किया है. They have lost Calvin Phillips. That's a huge miss. But Calvin Phillips was integral to Bielsa. The way एग्जैक्टली. he wanted to play. वेरी गुड Now when पॉइंट.
at Roca and Tyler Adams, they are basically those two midfielders who know what to do, they have to do. हाँ, At उनका एक times, लिमिटेड रोल है, लेकिन दे आर मतलब उसमें अच्छे हैं, मतलब दे डू प्रीटी वेल exactly. इन When फैक्ट. you look at the physicality of Roca, he can go against the best of the best. नहीं नहीं एकदम ट्रू, He मतलब has वही that दे हैव प्लेड इन दैट लीग जहां पर दे प्लेड अगेंस्ट द बेस्ट और ट्रेन विद देम, तो फेयर इनफ. exactly, लाइप्जिग एंड बायर्न में ना, तो एकदम फेयर. exactly. मतलब बाय द वे यहाँ पर क्विक शाउट आउट है टू R9. थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग, एंड यस द ओनली वन रोनाल्डो एंड ही वाज ब्राजीलियन. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक्स फॉर जॉइनिंग द मेंबरशिप, एंड यस ये शाउट आउट है टू ऑल द मेंबर्स, ऑफ कोर्स R9, बट ऑफ कोर्स ऑल द मेंबर्स, बिग अप मानव भी, एंड जो भी यार ज्वाइन कर रहे हैं मेंबर्स, डेरेन और लॉट ऑफ अदर्स दैट आई एम सीइंग. और यहाँ पर यस वी आर गोइंग टू कम टू ऑल द मैचेस, तो स्टिक अराउंड टिल द एंड भाई. सब लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए टू बोथ आवर चैनल्स एज वेल एज द पैनल्स चैनल. तो देखिए बार चेल्सी का देखते हैं, एंड आई नो दैट टुकल इज सस्पेंडेड, और बहुत ही फनी है. अब एंथनी टेलर का क्या हुआ? माइट बीन सस्पेंडेड आई नो, लेकिन एंथनी टेलर का क्या हुआ, कोई बता दीजिए मुझे भाई. आफ्टर दैट हॉरिफिक परफॉर्मेंस, आई डोंट नो. well there are commentators etc who are defending Anthony Taylor, god knows how. वो I know that क्या चलता है इंग्लैंड में, मतलब the bias is kind of real, लेकिन we cannot go talking about it. तो चलो आ जाते हैं यहाँ पे quickly on the Chelsea lineup. Again, every fan out there, you let me know आप लोगों को क्या लग रहा है चेल्सी क्या शुरुआत करी, because as I said Kante might be out as well as Kovacic might be out. तो ये लग रहा है मुझे lineup. The reason I have gone 4-3-3 is because considering that हम ज्यादा पोजीशन में रहेंगे despite it being away. जैसे हमने देखा था लास्ट मैच में, we started with a 3-4-3 but in possession after first 5 minutes we went into 4-3-3 with Loftus-Cheek joining in attack as well. तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा रह सकता है. Again like I said the same thing could be 3-4-3, लेकिन the fact that Kante Kovacic दोनों kind of missing है, तो Jorginho needs extra cover यहाँ. इसलिए मैं बोलता हूँ it's better to kind of start with a 4-3-3 with Loftus-Cheek and Gallagher. और with that performance Loftus-Cheek is undroppable at least for the next game. और खेलेगा whether it be right wing back or right central midfielder, right? लेकिन up front do you think that यार अंशुमन आपसे पूछता हूँ यार, Havertz missed that sitter, I know काफी रील्स चल गए, but Chelsea fans ने और ये भी रील्स चलाया है भाई, he had such brilliant touches. मतलब apart from the finishing he is world class, लेकिन with his finishing he is terrible. तो where what do Chelsea do? I know that we'll come to Mr. CR7 and Aubameyang वाला discussion, but what do you think about हमारे front line में हमें क्या करना चाहिए अभी के लिए? Yeah, to be very honest, Havertz, I rate him really highly, but I don't rate him as a number, as a striker basically. बिल्कुल बिल्कुल. You can play him as a playmaker. You can even utilize him on the wings because he has that physicality. You can say, he has the physicality. वो height है उस तरीके से उसके पास. He can be a good asset in the uh, box as well. But then he is not your out and out striker. He cannot give you like 20 goals. It's not Bundesliga. यहाँ पे मतलब अगर और तुम वहां लीग वहां पर भी स्ट्राइकर शायद एक ही सीजन खेला था, वो भी क्योंकि यार उनका मेन स्ट्राइकर इंजर्ड था फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. exactly. So he is not the solution. I still feel that Aubameyang will be your will be a Chelsea player. वो इस हफ्ते में हो अगले हफ्ते में हो, आई थिंक वाह चेल्सी भाई, विल जस्ट मतलब क्या आर्सेनल चेल्सी के बीच में क्या हो रहा है भाई रिसेंट इयर्स में? इतने सारे बेसिकली आर्सेनल प्लेयर्स कमिंग टू चेल्सी, all the people who can kind of produce are coming to Chelsea, and who are finished producing are going to Arsenal. No pun intended. for 30, Abhipraya is 30 out, I million. know. Yeah, they are quoting the price at around 30 million, and I think Chelsea will just go out and pay it. I Yeah, think मुझे they, मुझे they भी वही don't लग रहा है. have a problem with the pricing. I think it's just the personal terms they are dealing with. So I think with Aubameyang, I think with him coming in, the potency of the strike force basically increases by like twice. At this point of time, because he's a striker, he has, and he will be coming with that mentality. That he has to showcase his talent again. He has to show what Arsenal missed. Arsenal let go of. So भाई ये क्या जेली, आर यू अ स्पर्स फैन और व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक फॉर सब्सक्राइबिंग, होप यू लाइक आवर कंटेंट ओवरऑल. भाई वाई सैक टुकल, वाई हु कौन से भी क्लब के फैन हो भाई? इफ यू आर टेलिंग दैट टुकल डजंट नो फुटबॉल, मैन यू डोंट नो फुटबॉल, आई हैव टू से, एंड वी आर यू आर मोर देन वेलकम. हम हेल्प करेंगे आपको समझने में भाई. कम ऑन मैन, एज इन दिस आई एम नॉट इवन टेकिंग इट, बट आई हैव टू काइंड ऑफ हाईलाइट बिकॉज़ नॉट हैपनिंग. मतलब मे बी इट्स जस्ट पन इंटेंडेड, आई डोंट नो. Leeds was all Bielsa, don't know how they fare. Ankit bhai thoughts please. Yeah बिल्कुल यार, मतलब they will just about escape. जैसे अंशुमन ने बोला था about they've signed a few good players defensively, so that might just help them. और उनकी जो mentality इतनी ज्यादा change नहीं होगी attacking wise, तो I think they'll be fine. And yes, Manchester United पर आएंगे. और सब लोग भाई अभी prediction time कर लीजिए, because I feel that Broha might not start.
considering that we have to keep control क्योंकि Leeds hit on the break very well. So the moment Broha might lose possession, Tuchel is ज़्यादा safe. So he might basically just as in feel that नहीं we cannot lose possession in the attack और वहां पर he might use Havertz or we just finish better. That is all हम hope कर सकते हैं. That's all. तो यार क्या लग रहा है भाई एलन रोड पर है अंशुमन व्हाट आर प्रेडिक्शंस एवरीवन इन द चैट लीड्स वर्सेस चेल्सी एंड यस प्रेडिक्शन लीग फॉर द मेंबर्स इज ऑन पीपल डू कमेंट बिलो द वीडियो आफ्टर द वीडियो बट यस अभी भी चैट कर सकते हो अभी क्या लग रहा है अंशुमन स्कोर लाइन I'm going with Chelsea 2-1. 2-1 ओके लेकिन रेड कार्ड्स और नो रेड कार्ड्स लीड्स चेल्सी हमेशा कुछ ना कुछ होता है भाई होता है but I think they will just go with a bit more same mindset at this point of time because the manager is already out. And when you look at the squad is good, but at certain positions, you lack that depth at this point of time. So all of a sudden, Havertz goes, lunging or something like that. If he gets sent off, or someone like Sterling, all of a sudden you will have to just run back to, the players who are basically trying to sell. So that, that will make Chelsea to just be in their limits. And I think they will have enough. Premier League, you never know, but I think they will just have enough. And that too after playing, that sort of a game against Spurs. Correct. You guys really, really good. And as I said, apart from the refereeing, the game was absolutely fantastic. So I think 2-1. 2-1 because okay चलो 2-1 के लिए जा रहे हैं Okay, fair enough. I am going for a clean sheet यहाँ पर. I feel that yes, Leeds hit on the break. वो score कर रहे हैं last 2 matches में. काफी अच्छी form के साथ आ रहे हैं compared to what their standards have been last season. लेकिन I feel that Chelsea is due a clean sheet. So let's go for a clean sheet because Koulibaly is with every game मुझे लग रहा है भाई he's settling in. Kukurea has looked brilliant and of course Reece James भाई मतलब he's the man of the hour. So I'm really feeling और someone pointed about Gallagher and Mount के लिए apt game है. This kind of game is what they live for. Gallagher and Mount. So hopefully we'll probably defend from the front as well. Leeds 1 Chelsea 3. चलो nice. मतलब कुछ ना कुछ ड्रामा तो होगा. That is for sure. Again मैंने हिस्ट्री बताया क्यों. Billy Gilmore भाई again I doubt he'll stay. Considering that we are still going for a midfielder even after signing Chukwuemeka, ठीक है, is a clear indication that Billy Gilmore शायद ही रहेगा. Maybe Tuchel doesn't even see the same in his plans in future. It is sad because the guy is really having potential. लेकिन let's see. मतलब अगर लोन पे जाए तो अच्छा है मेरे लिए. That's what I would say अभी भी. Because he's still only 21 if I'm not wrong. Jorginho के पास बॉल जाता है जब ओन हाफ में इसीलिए डबल प्रोटेक्शन चाहिए उसको भाई. कांटे नहीं होगा मैच में. That's very bad but let's see. Hopefully Gallagher can do that. 4-1 Chelsea win. Chalo nice. Chalo, with that, let's get to the big game of the weekend. Of course, this was a big game, but I think, let's be honest, Manchester United versus Liverpool, any day is probably one of the biggest games in English football. We have to, admit that. Lekin, it is probably a time जहाँ पर दोनों ही clubs are kind of okay, as in बहुत iffy है, बहुत सारे. Of course, Manchester United, it has been a while, like Chelsea. We are, in the transition phase, just like Manchester United. लेकिन Liverpool भी, at this point in time with 2 back-to-back draws, Anshuman, yes, it's not just about the draws, लेकिन the way Darwin Núñez का red card हुआ, he's not available, और एक injury वापस से हो रहा है जो पिछले season में हुआ था. So I think arguably, yes, a lot of things happening at Old Trafford. फिर भी, is it not actually the time which is the best time to play Liverpool? And maybe Eric Ten Hag, if he gets a victory here, नहीं? We can get a and to be very honest, it's like I'm not even thinking of a victory, even being a United fan at this point of time because you can expect to attack their things in armor. Basically, you can say, "Chalo, ठीक है, Konate नहीं है, Matip नहीं है," and all that. But then you have to be in form as well. You have to have that mentality that you have to go out and win. The bunch of players that we have at this point of time, I have said that before, I will say it again, they're a bunch of clowns. They have absolutely no idea what they're doing on the pitch. So even after 5 minutes, you will see them and they will be like, what to do next. What to do next. So that's not gonna happen. That's not how you're going to beat Liverpool at this point of time. Many United fans might not like it, but I will be bluntly honest. Even a 10-man Liverpool comes to Old Trafford and beats this team. We are so shit at this point of time. I want them to play well. I want the manager to ring in changes as well. You are not going to get a win against Liverpool by playing the likes of Shaw or, playing the likes of Maguire. It's not going to happen. You have, seen them in the past.
And the thing that was very, very important, which is coming, as news as well, that he is looking to make at least 3 to 4 changes. You know, at least 3 to 4 changes. But as I said, at Old Trafford, you never know. You just, one moment of brilliance and with no Nunez, no Thiago, no Konate, no Matip, Alexander Arnold, we all know he's just all about crossing, cannot defend at all. One run behind him, anything can happen. But then, when you look at Salah, he's not fighting straight away. You look at Diaz, he scored a worldie last time, but he just woke up in the last. So at this point of time, without Jota, without Nunez, with Firmino, obviously we will have our chance, but we have to go in the game with the right mindset. You cannot go like, oh, you know what, it's Liverpool, whether we can win or not. If you have that doubt playing at Old Trafford against any team, you should just, take away your jersey and just go out of the dressing room, because you don't deserve to be at United. नहीं वो मतलब एकदम अंशुमान मतलब दैट्स व्हाई आई रेस्पेक्ट अंशुमान बिग टाइम यार मतलब ही सेज इट एज इट इज और अगेन इवन इन न्यूट्रल लिटरली फील्स द सेम थिंग अबाउट यूनाइटेड और अगेन दानिश भी यार बोल रहे हैं वही है मतलब लॉट ऑफ यूनाइटेड फैंस हु बीन फॉलोइंग थ्रू थिक एंड थिन know that it's almost painful मतलब we felt almost the same in 2016 जब Chelsea were मतलब down in dumps in the last part of Jose Mourinho I remember that. So United are almost facing that. Probably even statistically, I think after that season, among the top 6 teams, this is only the as in probably worse than that even, but this is kind of at par or worse than that. That any big team is done so bad. I know it's just 2 games, आप बोलते हो, लेकिन the way that those 2 games जो हुए, and bottom of the table 2 games doesn't matter. The point is 4-0 against Brentford आपने जो लिया है, यार you have to pinpoint यहाँ पर एरिक टेन हाग पर भी. Yes, I'm saying that it's a good time to play Liverpool, लेकिन I think his team selection is also slight concern क्योंकि यार weren't you surprised कि भाई Lisandro Martinez playing as centre back against Brentford. I understand भाई वो he's a new signing and I know that उनको back करना है तो but थोड़ा tactically it's kind of very obvious ना कि आपको change करना पड़ेगा. I think initially he wanted to go, he wanted to see basically what the old members who are already at the team can do, because this is a new phase. He wanted to see what he can do, what he should expect from those team players going up front. Because this was the same team, majority of the lineup that we have right now, this was the same team that finished second, that finished third. You cannot take that away from them, So majority of them were there when we finished second and third. So he wanted to give them game time. But after seeing what they are basically doing, and before the season started, I said one thing, I was mocked and I was laughed at. People said, the goalkeeper is the least of our concerns. Goalkeeper was least of our concerns, people told me. And I just said I remember that. हमने बात की थी उस बारे में. I remember that clearly. Yeah, that Eric Ten Hag plays from the back. If you have a keeper who cannot pass the ball to your midfielder or even to your attackers who are basically running for the ball, you are not going to succeed. Ajax played Highline, it was in Eredivisie. Here, they had Onana. He played like that. And at this point of time, we need someone who can do that. We don't have it. It was absolute, shambolic what they had did in that game. And I have been saying this, there is a reason he is not the Spanish number 1 anymore. Not even in the squad. Later on, number 1 is not even a part of the squad. Enrique sees it, people basically went out and people, called out Enrique, that he is shit, he don't know football. Enrique is at the top of the level, by doing things. He's not there by talking things. Right. So he knew if he's playing someone like Raya or, other players over him, he knows what he's doing. So that's what I said, that you have to change your keeper in order to basically sustain the style of play that Eric Ten Hag wants. Either just don't give the ball to your keeper, just ball playing midfielders, ball playing centre backs, and try for those. Just don't give keeper the ball, because not even a single kick goes to the player that he wants to go to. That's the thing. So नहीं बट लेकिन देखो कमिंग बैक टू बेसिकली लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द ऑपोजिशन. यहाँ पर यू आर प्लेइंग फेसिंग लिवरपूल और लिवरपूल देयर इज नो टू वेज अबाउट इट दैट क्लियरली भाई मतलब एज मच एज आई नो मीडिया एंड आई नो लिवरपूल फैंस माइट नॉट एग्री विद दिस लेकिन यार क्लियरली है जब लिवरपूल के इंजरीज होते हैं भाई मीडिया ऐसे बताती है भाई क्या बातम बन गया है और जब चेल्सी पूरे सीजन में होते हैं तब नहीं होता. दैट्स अ रियलिटी बट अगेन लेट्स नॉट गो देयर.
क्विकली मैं बोलता हूँ लिवरपूल की मिडफील्ड जी मैं ये बोल रहा हूँ ना पॉइंट अंशुमन हाँ देखिए एक यहाँ चीज लिवरपूल की मिडफील्ड में यू हैव थियागो मिसिंग यू हैव बेसिकली इफ आई एम नॉट रॉन्ग हु एल्स इज मिसिंग इन मिडफील्ड भाई कोनाटे इज डिफेंस में मिसिंग माटिप इज मिसिंग इन डिफेंस देन यू हैव Jota out you have Darwin Núñez suspended for 3 games as well as Chamberlain is out plus slide out Firmino है I know मतलब I still feel Firmino will start or he drops into midfield लेकिन will it not be the best opportunity for Ten Hag to start Martinez in that midfield when especially जब Henderson form में नहीं है जब basically Keita is not so confident at what he used to be and Thiago is out. See, now that we don't have Nunez to deal with, I think Martinez will play from the back. Now that we don't have Nunez, if Nunez was there, he could have been tried in midfield. And anyway, this is the last game we are playing without a CDM because Casemiro will be there for the next game. Wow, You you're know, so confident on Casemiro. चलो यहाँ I पर am so अंशुमन is yeah. Now we have realized finally, matlab we were chasing a lost cause. I have been very confident about Frankie De Jong on my streams, but वो इस वजह से मेरे को confidence था because now basically उसको घर से निकाल दिया है. तब भी is like standing outside the door and he's like I love you, I love you, I love you. So that's basically now he is begging to stay. Chelsea tried, United tried. He said no to both. He want to be there. For the first game, he was on the bench. This is transfer window is open like for what around 12 more days. Anything can yeah. happen. I think now United, and for the fact like even Chelsea, now I'm not hearing that Chelsea are going to pay for his deferred wage. Chelsea is going to put out like हाँ 85 लेकिन million. एक और चीज मैं बोलूँ अंशुमन लास्ट फ्यू आवर्स में ये भी हो गया है चेल्सी आर आल्सो इंटरेस्टेड इन कैसेमीरो हाँ, तो Chelsea can be interested in Casemiro at this point of time, but बट मतलब अगेन डोंट गेट मी रॉन्ग लेकिन मेरा यही क्वेश्चन है भाई एज मच एज कैसेमीरो वुड लाइक अ न्यू चैलेंज यूनाइटेड आर पेइंग क्रेजी वेजेस व्हिच प्रोबब्ली चेल्सी विल नॉट बी एबल टू पे लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग आई नो दैट ही स्टार्ट्स एवरी गेम इन यूनाइटेड मे बी इन चेल्सी में थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स हो सकता है विद कांटे एंड जॉर्जिनियो एंड कोवाचिच बीइंग देयर फिर भी मैं बोलता हूं ही विल स्टार्ट. Don't you think that Casemiro, who's won so much in recent years, this entire season, he's not like a Ronaldo, Joe. He's already 37. Well, he still has a good few years in him, in my at least perspective. 3 to 4 years, 3 to 3 years Huh, minimum. so is it like not too much of a risk at his end to go to United? I'm just thinking from his perspective, like what is his main motivation? Or yes, I know they want a proper DM now. Abhi realize ho gaya finally United ko. Yeah. Lekin do you think United also play the way that Casemiro likes? Is it a See, big risk? The way Eric Ten Hag used to play with Ajax, he Hmm. always had that CDM. Whether he utilized him a lot or not, people we have talked that he played pivot. Two midfielders, hardworking midfielders. Even not out and out CDM, but he had. So with Casemiro, he gives you like a three-dimensional thing. You know, we have seen Casemiro making those runs. Real Madrid, he has made those runs. It's like he's not needed. उसको बस बोला हुआ है कि you just sit back, and Cruz and Modric and we have Benzema, we have Vinicius and everyone they can do the job. With United, he will be have he can sit, he can even run, and what he does is if we bring him Casemiro, according to Einstein, according to even Santi, Jay Santi, something like that. He's very reliable when it comes to Real Madrid and नहीं नहीं Atletico Madrid. मैं पढ़ ही रहा था डेविड ऑस्टिन का ही पढ़ रहा था अभी तो हाँ, सीम्स लाइक 70 million euros is what the final price is going to be लेकिन yeah, they want अभी भी wanted रियल 56. मैड्रिड लेकिन एंचेलोटी तो हाँ नहीं भरा है ना. नहीं, एंचेलोटी को भरना नहीं है. Perez, he talked directly to Perez. You know, हम्म. Perez said we want to keep you, but final decision is on you. वाओ Perez, मैंने तो ऑलमोस्ट नकार दिया था कल टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं मतलब आई वाज लाइक शॉक लाइक कम ऑन मतलब इनफैक्ट काफी मीम्स भी शुरू हो गए थे रात में दैट बेसिकली एज इन ही वाज लाइक ही थॉट इट्स सम अदर क्लब इट्स नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड देन ही फेल्ट दैट ओके दे आर नॉट इन चैंपियंस लीग ओके देन मे बी नेक्स्ट ईयर ये सब शुरू हो गया था आई डोंट नो मे बी मतलब you're right David Austin is someone that who cannot be ignored at all at the same time so yeah. there is certainly reality लेकिन वही in the last Even few hours all the Madrid pages who basically reports only when things are getting very close, they have basically announced that we are in the final stages, advanced stages. So Well, we have. मैं सच में बोलता हूँ भाई मैं अभी भी really shocked if it happens but transfer window I लाते हैं will भाई be shocks. shocked as well. I will be shocked as well क्योंकि
this basically indicates that the Frankie de Jong saga is over, at least for us. For Chelsea, whether it's over or not, I cannot say. But for us, it's नहीं basically over. फ्रैंकी डियोंग इज ओवर, मतलब वो तो रहने वाले बारसा, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना, इतना लेट इवन बर्नार्डो गोइंग टू बार्सिलोना, आई डोंट सी इट। अगर होता भी है तो वर्स्ट केस में वन ऑफ देम विल नॉट प्ले, दे विल नॉट गेट रजिस्टर्ड। यस ओबामेयांग के लिए हम जा रहे हैं, बट अगेन दे माइट नॉट गिव द ग्रीन सिग्नल टू डिपाई, देन डिपाई माइट जस्ट स्टिक अराउंड, तो देयर माइट बी लॉट ऑफ चेंजेस अभी वहां पर। Depay is going to Juve. नहीं लेकिन डिपाई और ओबामेयांग दोनों को लूज नहीं कर सकते ना, दैट्स वन मोर थिंग। वो ओनली रीजन दे वर गोइंग फॉर दोनों चल जाए इज बर्नार्डो सिल्वा चाहते थे वो, क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा कैन प्ले द फॉल्स नाइन जस्ट लाइक फरहान टोरेस कैन इन लेवेंडोव्स्की एब्सेंस, तो वो एक रीजन था। लेकिन अभी यार मुझे नहीं लगता वो होने वाला है, इसलिए मैं बोलता हूँ एक जन शायद नहीं। और लेकिन चेल्सी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है अभी इन द लास्ट फ्यू आवर्स। लेकिन वही है, अगर चेल्सी को एक और मिडफील्डर चाहिए और कासिमिरो को सच में चाहिए ना, मतलब ऑनेस्टली आई रियली फील दैट चेल्सी कैन आल्सो गो फॉर हिम। यस काफी यार यूनाइटेड ने मिस कर दिया इन टर्म्स ऑफ स्काउटिंग, जस्ट लाइक वही है चेल्सी यूनाइटेड, यार कोई सिस्टमैटिक प्लान नहीं था, दे वर स्टिकिंग टू अ कपल ऑफ प्लेयर्स ओनली, बैकअप प्लान्स वर नॉट गुड एंड दे वेंट इन रियली लेट, बाय देन बेसिकली उनका वैल्यू बढ़ गया था एनीवन इन द ट्रांसफर मार्केट। यूनाइटेड नीड एग्रेसिव प्लेयर्स लाइक परेडेस, गीडर, रोड्रिगेज, कैसेमीरो, या दे नीड इट, बट वही है वेदर दे गेट इट इज अ बिग क्वेश्चन नाउ। मुझे मुझे इट इज कैसेमीरो शॉक इससे लगा ना भैया, that all of a sudden we went in, like, you know, like after that 4-0 I was expecting a backlash, like, you know, कि fans को थोड़ा खुश करने के लिए, you know, but now they're going all guns blazing, you know, and that हाँ has मतलब नॉट जस्ट कैसेमीरो भाई, मतलब दे आर गोइंग फॉर बैकअप इन कैसीडो, अगर वो नहीं आता तो वर्स्ट केस में देन फ्रॉम ब्राइटन, देन बेसिकली इफ आई एम नॉट रॉन्ग विंग में भी गैक्पो था, अभी यार दे आर ऑल्सो गोइंग फॉर पुलिसिक लोन, वहां पर टॉड बली मना कर दिया है कि भाई मैं ना यूनाइटेड को लोन पे नहीं दे सकता। we are going all out for Anthony, 67 million we are paying him. हाँ अब एंटनी के आ रहे हैं एग्जैक्टली, तो एंटनी के स्टोरीज वापस से शुरू हो गया आज, तो लुक्स लाइक वही है लास्ट 72 आवर्स में जो हुआ है, स्पेशली आफ्टर लास्ट वीकेंड्स परफॉर्मेंस, तो इट्स क्लियर दैट यूनाइटेड आई नो नीड्स टू ब्रेक द बैंक, देयर इज नो टू वेस्ट द वर्ड ऑन। हाँ टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड, पास्ट में भी आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, बट अगेन टाइम्स हैव चेंज्ड। If you all remember Claude Makélélé जब आए थे रियल मैड्रिड से, I remember Zinedine Zidane had said कि how can you let this guy go when he joined Chelsea, लेकिन वही है ना, things happen, लेकिन उस समय you can argue same चीज, Chelsea at that time were not basically the big power that they probably became, they were there or thereabouts, लेकिन we weren't the big power। और अभी यार यूनाइटेड आर इन दैट फेज जहां पर दे वांट टू अगेन बिकम दैट बिगेस्ट पावर इन इंग्लैंड, सो मे बी यार दैट्स व्हाई दे हैव टू गो बिग, सो मतलब रीजन राइट है, लेकिन वही है coming to United from a Real Madrid, coming to Eric Ten Hag from an Ancelotti, for me doesn't make sense, but again it's his choice of course, I think, and you yes know, the biggest sense that makes to him at this point of time is he knows that, you know, it's just 2 games. First of all, it's not like winter, you know, where you have played like 16 17 games and, you know, you are looking down the barrel and you have no chance of even playing Champions League next season. So so the first factor is you have 36 games left. He can come and he knows he can make the difference. You know, it settles in that midfield, and that basically the license, you know, gives the license to likes of Donny, Ericsson, you know, with we have also Bruno up there. So it gives license to everybody, you know, everybody. Second thing is, at the age of 30, you know, you're basically getting your salary doubled. You know, this is your last big contract. You know, Real Madrid was not going to give him a contract. So बेसिकली he जो रूडिगर के साथ हुआ जब वो गया रियल मैड्रिड फ्रॉम चेल्सी। exactly. So for him, it's like the, you know, his last big contract, last big payday. He is already on like what, 5 million. We are going to give him around 9 million, 9 or 10. So it's basically double, you know, and we are going to give him at least 4 years contract. So we want him till 34. It's whether it's going to be 3+1 or whether it's going to be 4, you know. But you know, as even Fenefilic is saying, you know, it's too good to, you know, pass that offer at the age of 30. You basically play for money. You already have won everything with, you know, and with joining in United at this point of time, you will have to, you know, will have that extra motivation to be a hero. Like, you know, you बिल्कुल settle in बिल्कुल that midfield, and you basically become a folklore, like, you know, legendary status straight away. So at this point of time, we are going for it. It's just we have, you know, become a bit late now. You know, this thing we should have done it like a month back. हाँ प्री सीजन में he should have been part of it, to be very honest, if Exactly. that Now was a that he doable has thing. played and he is fit enough, you know, he will just settle in. If no, according to Madrid people, you know, the people who are reporting from Madrid, they are basically saying it can happen as soon as tomorrow. Wow. Because Again मतलब let's see, time will United are tell. doing
so hurry. United is in so hurry. Basically, you know, people are saying that they won't be surprised to see Casemiro on bench against Liverpool. Wow. मतलब that तो I really doubt, but anyway, let's see. मतलब anything can happen in football. That's why we love the game, right? Again, people just जो भी join किया है, again, do not forget to like the stream यार. सब लोग आ रहे हैं boy. I Please like the stream. like करने में it's not gonna take your time or money, ठीक है? But it's gonna help the Yeah. stream a lot. बिल्कुल बिल्कुल and as I said we are very close to 5k. Let's get us to 5k and let's get the United Road भी वहां पर. He knows his stuff. Anshuman, definitely it's tagged in the title, absolutely. भाई मतलब लिवरपूल की थोड़ी बात कर लेते हैं. Yes, we'll come back to the transfers for sure because again Liverpool are not going through a good time. Again भाई क्लॉप काफी सारे चीज बोले थे, but before going to the Liverpool squad, भाई यूनाइटेड का एक चीज तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफ कोर्स एम्प्टी ओल्ड ट्रैफर्ड. तो दिस इज समथिंग गोइंग ऑन. तो Not gonna happen. अंशुमन, प्रीटी श्योर आप ये एक्सपेक्ट करोगे इस वीकेंड? Not gonna happen. तो बोल नहीं, not gonna happen. Protest नॉट होगा. गोना हैपन. Protest hoga. There might be few empty seats, but a game like United versus Liverpool, you know, at home, and you are coming basically from 2 losses, people are going to be out there in numbers. मतलब अगर कोई अगली सीट अपनी दे भी रहा होगा ना, तो उसको लेने के लिए 10 लोग खड़े होंगे वहां पे. You know, there will be like 10 people around the stadium who will be like, you know, give us the tickets. Empty Old Trafford नहीं होने वाला है. You know, these kind of things. Imagine, you know, Old Trafford, you know, Stamford Bridge, now even you can say Etihad. There are so many people who are coming from, you know, like miles and miles, thousands of miles away to हाँ watch that मतलब game. प्री प्लान मतलब एक साल पहले प्लान करके आते हैं बहुत लोग तो. Exactly. You really expect them to just go out and say, you know what? Oh, 5 बंदों ने बोला है भाई, you know, empty Old Trafford, रहने दो, हम बाहर ही रहेंगे. नहीं होने वाला ये नहीं होने वाला. एक supporters club, you know, they might do it for a certain time. I want it to be, you know, I want it to be empty for sure, but मैंने सीधा सीधा बोला ये तुम कितने भी हैशटैग चला लो, you know, I will support it, I will be a part of it, but it's not gonna happen. You know, empty Old Trafford कभी नहीं होने वाला. एतिहाद और ऐसे थोड़ी है. मतलब यहाँ पर मैं क्विक एज ए न्यूट्रल मैं बता रहा हूँ भाई. अगेन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल is basically, if I'm not wrong, the most kind of watched match in English football. Okay, that's a Yeah, reality. Or yeah, secondly, not just watch. Yeah, like I said, it's about the form of the team. Yes, definitely you can. मतलब मैं काफी चीज में बोल चुका हूं अंशुमन that हमेशा glazers out पर ही आते हैं. Like more than that, even first भाई आप अपने देखो प्लेयर जो है अभी कोच देखो वहां पर भी काफी इश्यूज है इन टर्म्स ऑफ बेसिकली एप्लीकेशन, इन टर्म्स ऑफ बेसिकली कॉन्फिडेंस. तो वहां पर अगर आप आ भी नहीं हो तो और भी यार प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस मरने वाला है. तो आई वुड से दिस मैच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लिवरपूल के साथ 9-0 था भाई लास्ट सीजन में. आई नो प्री सीजन में यू बीट लिवरपूल बट यू हैव टू गेट अ वन राइट. मतलब yes, last I think 4-5 matches में I don't remember that Liverpool have beaten United at all, right, in terms of head to head. So I think it's high time that they get a good performance in the league, नहीं? yeah. मैं वही बोल रहा हूँ भैया कि at this point of time, you know, you have to keep that one thing in mind, you know, that motivating factor that you win against Liverpool, you are basically ahead of Liverpool in the points table. इससे इससे ज्यादा मोटिवेशन तुम्हें क्या चाहिए भाई? If you are beating Liverpool, you are basically going ahead of Liverpool after 3 games. ठीक है, तुम्हें इससे ज्यादा क्या चाहिए? इससे ज्यादा मोटिवेशन एज अ यूनाइटेड प्लेयर तुम ले ही नहीं सकते. बिल्कुल And बिल्कुल. in terms of 74,000 people, you know, cheering for you from the first moment, if you are not going to put up your best, ठीक है, you know, as a United fan, as any football fan, even as Chelsea fan, you don't expect the team to beat win every game, you know, every game. But obviously, you expect the players to at least show up, give a fight. ठीक है, at this point of time, we are not at level of Liverpool or, you know, you can say level of Chelsea or level of City, you know, but you just cannot go into the game feeling like beaten already even before you have kicked the ball. You know, you Absolutely. You cannot know go what? with that. Yeah, you cannot go with that mindset. So far, we are going with that mindset. You know, I know. if it's not changing, we are not going anywhere. बिल्कुल. And yeah, shout out to Statman Stubbs also. Statman Stubbs is a brilliant channel. He's a Liverpool fan, of course, in the house. So yes, Statman Stubbs, what are you saying? What's going to happen? And everyone in the chat, आप बोलिए. First of all, do you agree with this lineup of Liverpool? Yes, काफी लोग बोल रहे हैं that Henderson should start in this big game. लेकिन the fact is he's not in form, not in confidence. And अगर आपने केटा के लिए भाई आप फ्री में नहीं है भाई, and he's done
pretty okay. It's not that terrible किया है. So I think this has to be the game that Keita comes in, and of course Milner I don't think will be ideal for this game in my opinion. तो ये है मेरा lineup. What do you think about this? Any Liverpool fans or neutrals? And of course scoreline. Let's come to the scoreline. Yes, I think if I'm not wrong, Martial is still not 100%, so he might miss out from United side. Like I said, a lot of injuries Liverpool का है. He will, I cannot expect Nat Phillips. he is training, he will be on the bench. Start नहीं करेगा but हाँ bench पे होगा. एग्जैक्टली बेंच पर रहेगा. लेकिन गोमेज मेरे ख्याल से लिवरपूल के साथ शुरू करेगा, एंड अगेन दैट माइट बी अ गुड थिंग. यू नो नैट फिलिप्स हैड टेरिबल फर्स्ट फ्यू मिनट्स लास्ट मैच में. लेकिन अगेन क्या बोल रहे हो यार, स्कोर लाइन क्या होगा अंशुमन? स्कोर लाइन भैया क्या बोल प्रिडिक्ट रहा ही नहीं करता, आपको भी पता है ये. आप मेरे चैनल पे भी हो, मैं यूनाइटेड की स्कोर लाइन प्रिडिक्ट ही नहीं करता. So चलो, I'm just बट एनीवे यू फील दैट लिवरपूल आर गोइंग फॉर इट राइट फॉर दिस गेम? Liverpool will definitely go for it, and I think that if we are, I'm just waiting to see the lineup. If the manager is going to change 2 or 3 players, you know, I will be optimistic of a good show. Whether we win or not, totally out of context at this point of time. But I will expect them to fight for their lives. Someone like Sebastian, someone like Donny, someone like Varane and Martinez. Because Martinez, I think, will start again, and he should start again. One bad game, it's totally fine. You got bullied, but no one helped you out. It यार happens. लेकिन आई नो वी हैव मतलब बीटिंग ऑन द सेम टॉपिक यहाँ पर, लेकिन वही इतनी बड़ी गेम है और देयर वाज सो मच हैपेंड एट लास्ट वीकेंड विद बोथ द क्लब्स. देखिए यार, इन टर्म्स ऑफ बेसिकली डार्विन नूनेज़, आई अंडरस्टैंड ही इज इनएक्सपीरियंस एंड ऑल दैट. इवन मार्टिनेज यार वो नया है प्लेयर, आई टोटली अंडरस्टैंड, यू हैव टू गिव हिम टाइम. लेकिन it comes down to the coaches, right? Eric Ten Hag should be saying yes, that is basically the new United way, वही खेलना है. लेकिन दाविड डिया है, तो why continue with that when you're already 1 goal down? That is only my point. Like come on. So इसीलिए वो इतना भी वो हगेगा फील्ड पे, इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करता ना कोच. कि all of a sudden you are so rubbish that you cannot even find like 10 people with 10-yard pass. वो क्या लॉजिक है, क्या देना है पास? हर चीज कोच मैनेज नहीं कर सकता. That's what he said even after the game, that he cannot do magic on the field. All of a sudden वो डेहिया को भाई नॉयर थोड़ी बना देगा वो. बिल्कुल But बिल्कुल. the decision of keeping De Gea will definitely come on Ten Hag. ये देखिए, दानिश एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन है और बोल रहे गेट डियाज एंड साला आउट आफ्टर दैट लाइनअप विल बी फैंटास्टिक. मतलब वही है ना, डियाज भाई मतलब ही कैन टेक थिंग्स बाय द स्कफ ऑफ द नेक, वही है रखता है वो बंदा. 2-2 ड्रॉ बोल रहे आरित्र, बारसा फैन, तो आरित्र नाइस टू सी यू एज ऑलवेज. व्हाई मार्टिन इज नॉट प्लेइंग मिडफील्ड? देवेश, मैंने तो बोला है भाई ही शुड प्ले इन मिडफील्ड बिकॉज ये एक बहाना होगा फॉर हिम टू ट्राई इन मिडफील्ड. लेकिन अंशुमन हैज अ पॉइंट अबाउट व्हाई चेंज नाउ आफ्टर 2 games, which is also absolutely fine. यहाँ पर मैं वापस ले रहा हूँ भाई, 0 Salah will score both the goals. I feel देखते हैं United links with Sommer. यार वो Mönchengladbach में रहेगा. He is also having a deal with Mönchengladbach to agree or not. So मुझे लगता है वहीं रहेगा. Let's see who comes to the second goalkeeper. It's World Cup year. He wants to be the number 1 for Switzerland. वो रिस्क नहीं करेगा वो. बिल्कुल बिल्कुल. एंड यस, यहाँ पर ये पॉइंट है, मतलब आई नो हम बात कर रहे हैं अबाउट, अभी तक हमने बात किया है लीड्स वर्सेस चेल्सी एंड ऑफ कोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड लिवरपूल. बाय मेरे प्रेडिक्शंस ये है दैट इन दिस गेम यस लिवरपूल विल कम अप ट्रम्प्स. लेकिन मुझे लगता है भाई लाइक वही है, चेल्सी यूनाइटेड आर सम टीम ना, सम गेम्स यू टर्न अप. और वही प्रॉब्लम है हमारे टीम्स के साथ यार, वी आर नॉट कंसिस्टेंट. वो एक मेंटालिटी नहीं है, वीक इन वीक आउट वाली मेंटालिटी नहीं है. और मुझे लगता है वेरी वेरी स्ट्रेंजली, यस मैं लास्ट वीक भी सेम चीज बोला था, लेकिन लास्ट वीक वाज डिफरेंट. ब्रेंटफोर्ड, I have to give them credit. यहाँ पर लिवरपूल are also less on confidence, so they might just turn up, but Liverpool will come back and score 2. So I'm going for a 2-1 Liverpool win away at Old Trafford. Yes, not very high scoring, लेकिन ये पॉइंट जो है ना, देखिए भाई वुल्व्स आर डूइंग मैडनेस, बहुत सारे प्लेयर्स को साइन कर रही है, इसलिए दे माइट हैव पेड्रो नेटो अवेलेबल, इसलिए पोल में भी डाला है मैंने. एंड नॉट जस्ट दैट, रूबन नेवेस टू बारसा भी सुनने में आ रहा है, इफ बारसा गेट रिड ऑफ बेसिकली फ्रेंकी डी जॉन्ग और बर्नार्डो नहीं आए तो. लेकिन वही है, कमिंग बैक टू दिस वन, आई नो मे बी कैसेमीरो माइट हैपन एज पर अंशुमन, लेकिन भाई Ruben Neves, why not? Why haven't you gone for Ruben Neves the entire summer? Because I don't think he's worth that much money. Simple as that. Okay. I have said that. I have said that you just cannot keep on paying the money that every club wants. मतलब हम 80 million दे रहे हैं for the likes of Frenkie de Jong, हम 75 million में Ruben Neves ले. He's not even half the player that Frenkie de Jong is. And I'm saying it this, मतलब वही ना, लेकिन Premiership, he knows Premiership and all that, तो थोड़ा सा टैक्स तो लगता है. Not like he has lighted a Premiership. हाँ, he knows. बिल्कुल, I agree. It's not like he is like someone like Reece James
you know, he's not someone like मतलब हार्वी एलियट, you know, जिससे बहुत ज्यादा expectations है. He has done things. It's not एक बड़ा game, you know. Tell me like 5 good games in the season where he have just totally dominated. ठीक है कि मतलब जाके एकदम डोमिनेट करके अपने बदौलत उसने गेम जिता दिया. इनफैक्ट ब्रूनो से लड़ाई हो गई थी उसकी, याद है लास्ट ईयर फर्स्ट मैच में. आई रिमेंबर दैट एपिसोड वेरी वेल. आई थिंक इट वाज अ फाउल दैट probably Wolves did not get, but anyway that's Liverpool won, United won R9. सबको आप जिस तरीके से पैसे मांग रहे हो उतना देने लगोगे फिर तो भाई ट्रांसफर मार्केट में यू विल बी अ जोक. ठीक है. सपोज करो इफ वी आर रेडी टू पे 75 मिलियन फॉर समवन लाइक रूबन नेवेस, रियल मैड्रिड क्या बोलेगी हमें, तुम्हें क्या 70 मिलियन में कैसेमिरो दें तुम्हें, यू नो. जबकि दोनों के इसका बहुत ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है. वन इज लाइक अ 5 टाइम यूसीएल विनर, मल्टीपल टाइम ला लीगा विनर, यू नो. सपोज करो ठीक है 4 साल का डिफरेंस है, 4-5 साल का, बट क्वालिटी में भी तो देखो, you know. And it's बिल्कुल. not like he has done, you know, consistently for like a season or two. He is doing it for like years. वो चला आ रहा है कासेमिरो का. थोड़ा इंजरी इश्यूज रहता है वो हर प्लेयर के साथ. इवन कांटे सफर्स फ्रॉम इंजरी इश्यूज, you know. बट वही वाली बात है कि when that sort of a player is out there, you know, and that's why we have not gone for someone like this. Now we are linked with Savage, you know, Milinkovic Savage. He is available for 45 million. Yeah, You he know, वो Inter he turned out Inter, right? He was supposed to go to Inter or maybe even Arsenal के साथ भी लिंक होता है, लेकिन हर सीजन होता है यार वो तो लिंक. yeah, ये हर सीजन होता है, but this time now that we know that it's not gonna cut out, you know, we have Johnny and we might not just go for him, but अभी उस तरीके से है. If I think we बेसिकली will go, बैकअप प्लान है. I think we will go for either of them, you know, either someone like Anthony or, you know, Savage. I think Eric Ten Hag just might go with Anthony and play Donny more, or you know, play Fred more alongside Casemiro if that happens. So Casemiro is now नहीं मतलब all of वही है. आई थिंक मिलिंकोविच साविच वाज मच मोर रियलिस्टिक इन माय ओपिनियन, लेकिन अगेन द फैक्ट इज कैसेमिरो मतलब भाई नो कंपैरिजन इज बेटर. ठीक है, और ही इज अ प्रॉपर एज एन हार्ड टैकलर जो चाहिए आपको आज के समय में. Milinkovic Savic is not a CDM. He's like a proper box to box. या ही इज मोर ऑफ अ प्योर सेंट्रल Yeah. मिडफील्डर. लेकिन हैविंग सेड दैट, यार ये देखिए राइट बैक का सिचुएशन भी आपको एड्रेस करना है ना. मतलब लेफ्ट बैक तो चलो कर लिया है, मलाशिया इज योर फ्यूचर, बट डू यू थिंक राइट बैक में सर्जिनियो डेस्ट हु इज आल्सो बीन लिंक्ड नाउ, दोनों इज ही द क्या गाय? इस देश से बढ़िया तो मैं लेड खिला लूं लोन से वापस बुला के. वही मैं मतलब आई एम सरप्राइज्ड विद दैट लिंक एज वेल. मे बी इज जर्नलिज्म, Yeah, we are पता नहीं. getting linked with Minier, but for that we need to sell. We are getting linked with Minier, and I think they want around 15 or 18 million. तो हमें उतने पैसे एटलीस्ट, यू नो, अपने राइट बैक को बेच के रेस करने पड़ेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. एंड यस आई नो लॉट ऑफ पीपल इन द चैट. भाई सब लोग यार मुझे पता है भाई आप लोग ट्रांसफर स्टोरीज में इंटरेस्टेड ज्यादा रहते हो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. लेकिन वही है मतलब देखिए मतलब हम रोज रोज बात करते हैं ट्रांसफर्स की, लेकिन द फैक्ट इज हम ट्रांसफर्स क्यों होते हैं फुटबॉल में? क्यों होते हैं? बिकॉज उनको फुटबॉल खेलना है, उनको कप जीतना है, और वीकेंड में मैच है भाई, तो हम मैच का प्रीव्यू कर रहे हैं अपन हर एक मैच का थ्रू आउट द एज एन फुटबॉलिंग एज एन यूरोपियन सीनरी. मतलब एनीवे देखते हैं. बट बीच बीच में हम ट्रांसफर्स करेंगे एज मच एज पॉसिबल. अगर आपके कमेंट्स आर रिलेटेड टू व्हाट वी आर स्पीकिंग, देन आई विल ट्राई एंड हाईलाइट इट. नहीं तो आई विल ट्राई एंड कम बैक, नहीं तो यू कैन ऑलवेज सुपर चैट एंड लेट मी प्रायोरिटाइज. लेकिन हैविंग सेड दैट, मतलब आई नो आयुष, मतलब अगेन वही हम बात कर चुके काफी. आई थिंक यूनाइटेड शुड नॉट साइन एनी प्लेयर्स नाउ. Study the team and scout according for the next 6 months. In January transfer window, sign players, learn something from City. वही है मतलब उतना पेशेंस है क्या यूनाइटेड फैन बेस में? आई डोंट थिंक सो. It's not about patience. You cannot compare with City. ठीक है. सिटी 6 महीने स्काउट नहीं करती है. You know, whoever thinks that City scouts for 6 months for few games, City उस तरीके से, City have a structure in place. उन्होंने पेप को लाने के लिए ना 3 साल पहले जो पेप का सबसे क्लोजेस्ट बंदा था उसको लेके आ गए थे वो. So that's how, you know, meticulously they planned basically about everything. तो वो किसी को भी लाता है तो ऐसा नहीं है कि उसने 10 गेम अच्छा खेल लिया तो उठा के लिया. So बिल्कुल बिल्कुल. in that way. So United को पेशेंस रखना भी नहीं चाहिए. By the time we are, you know, looking for 6 months, हम उस टाइम तक ऐसे पोजीशन पे होंगे जहाँ पे, you know, यूरोपा की भी हालत नहीं रहेगी. तो we need to make signings and we need to make signings very quickly. ये हमें 1 महीने पहले करना चाहिए था. बट चलो ठीक है, वही बोलते हैं ना, देर आर दुरुस्त है, वही वाली बात है कि बस कर लो, फिलहाल कर लो. उसके बाद फिर we will see about, you know, what to do. Because as I said, one signing like Casemiro basically changed the entire mood of the club. You know?
Simple. Let's see, matlab, again, matlab, you also need some experienced heads who have won things. And again, talking about it, Thomas Munier is not the ideal defensively, लेकिन भाई वही है, he brings experience. Let's see कौन आता है कौन जाता है. Let's move आइडिया on क्योंकि यार काफी सारे पास जो है अभी, जो हमारे पास डलो नाम का रबिश प्लेयर है और जो हमारे पास बैन बिसाका नाम का कचरा है, ठीक है, oh my तो god. उसका नहीं नहीं, I बेसिकली hear वो you. म्यूनियर अभी आके ओल्ड ट्रैफर्ड पे स्लीप वॉक भी करेगा ना, तो ही विल प्ले बेटर देन दोस टू क्लाउन्स, ठीक है। बिल्कुल एक से बिल्कुल. डिफेंड नहीं होता, एक से अटैक नहीं होता, एक की पोजीशनिंग सही नहीं है, एक से क्रॉस नहीं होता, पता नहीं करते क्या है ये ट्रेनिंग में। नहीं यार वही है, मतलब दे नीड टू वर्क थिंग्स आउट क्विकली, बट हाँ टुगेदर इज व्हाट, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा. कमिंग मूविंग लेट्स मूव ऑन यार. मतलब काफी सारे गेम्स है. यस, अभी तक 2 गेम्स हमने कंप्लीट कर दिए. वी हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम. और उससे याद है भाई सब लोग, लेट्स नॉट जस्ट लाइक द स्ट्रीम, आल्सो सब्सक्राइब. We are very close to 5K on this channel, as well as let's get 4K on Almighty Sports Plus. Let's get Anshumaan there as well on the United Road. It's tagged in the title and in the description as well. तो टॉकिंग अबाउट सिटी, हम बात ही कर रहे थे अभी, सिटी का गेम का क्विकली डिस्कस कर लेते हैं. यस, अब बोलोगे सिटी हैज बीन व्हाट डोमिनेंट टीम अभी तक, along with Arsenal, only team to be unbeaten in the Premier League, or rather not dropping any points. Perfect record रहा है. लेकिन they are playing Newcastle United at St James's Park, right? Yes, definitely you can say that Man City will still be favorites, लेकिन Newcastle have made crazy number of signings as well. Not just crazy number of signings, आई थिंक एक डॉगनेस, एक टीम में फिट होने वाले बंदे लाए. तो देयर माइट बी, आई डोंट नो, टॉकिंग अबाउट सरप्राइज रिजल्ट्स, आई डोंट नो, देयर माइट जस्ट बी सम सरप्राइज. लेकिन लास्ट टाइम मैन सिटी पेलती थी न्यूकासल को 5-0, सबको याद होगा, मई में हुआ था ये मैच. और उससे पहले भी आई थिंक 4-0. तो आई थिंक not just Liverpool have beaten Manchester United 9-0 in 2 games, by Man City has beaten Newcastle 9-0 in 2 games. So Newcastle have something there. मतलब अंशुमान, आई एम आस्किंग दिस, भाई न्यूकासल के लिए क्या लग रहा है? द वे दैट दे हैव गॉन इन द लास्ट कपल ऑफ गेम्स, दे हैव लुक्ड क्वाइट इंप्रेसिव मेरे लिए. तो डू यू थिंक दे हैव इट इन देम टू फिनिश इन द टॉप ऑफ द टेबल फॉर श्योर? I don't without Jimenez, I think Wolves are going to struggle for goals. With we are so much in trouble at this point of time, we will make signings and we will push. You know, so there are certain reports that suggest that in the last 2 weeks we are, at now after losing 2 games, we are going for like 4 to 5 signings, and I am not surprised. I am not surprised for the reason that all of a sudden they know that even if you have to make the money from the club, you know, we will have to. It's not like Glazers are going to put their own money. Even if they spend like 500 million in a window, I will still be Glazers out. That goes without saying. But now they will try to at least calm this, wave of protest, or try to get those names in, just to divert everyone's mind. But I think Newcastle, I don't think they stand a chance. ओके, फेयर They इनफ. might end up scoring 1 goal. Yeah, bilkul, bilkul. Yes, by the way, yes, people are still putting Manchester United comments. I'm going to be reading that, but again, the fact is that 1 घंटा हो गया, हम काफी सारे matches को discuss करना है, so we'll come back to this. Big up to Matata United as well. And yes, we have been discussing for 1 hour people, so people who've joined it, please आप वापस से check करिए, हमने literally हर एक चीज discuss कर लिया है. तो we will move on and we'll come back to Chelsea, Leeds, Manchester United and basically Liverpool अगर time रहे तो. तो टॉकिंग क्विकली अबाउट, आई थिंक मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अगेन फॉर एफपीएल मैनेजर्स आउट देयर, मैं देख रहा हूँ इन केस इफ देयर आर एनी मिसिंग प्लेयर्स, यस, कैल्विन फिलिप्स, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज स्टिल आउट फॉर सिटी. दैट इज व्हाट है. लपोर्ट शायद अभी तक आउट है, व्हिच इज नॉट ग्रेट फॉर सिटी. आई नो दैट, मतलब अगेन दे आके has done a good job in my opinion, तो it's fair enough. लेकिन वही है, they would like to see Laporte. I know a lot of City fans. On the other hand, Newcastle मैं देख रहा हूँ, okay, Matt Target might be missing. He has a hamstring injury, so that is not good news for them. So I think Shelby also has a hamstring injury still, so he might be out. Ryan Fraser, I think he might just be available, I think, if I'm not wrong. थोड़ा सा बैक इंजरी हुआ था उन्हें, but I think he might just be available. So I won't be surprised if he plays. लेकिन again, जो tactics खेलते हैं ना पेप, हालैंड, यस, एक बहुत मीम मैंने उसके बारे में बात किया था अपनी वीडियो में, अंशुमन, that Haaland had 8 touches, but the fact that he already got an assist and he could have also got a goal in those 8 touches, that is madness. So where do you think say the other people will get a chance? मतलब I know we spoken about Bernardo Silva काफी on streams, आज भी बात किया हमने, लेकिन do you see an Alvarez doing enough to kind of displace Haaland?
क्योंकि हालैंड विद 8 टचेस इफ ही गेट्स 1 गोल एंड असिस्ट तो कैसे डिस्प्लेस करेंगे यार? They needed depth. So basically, Alvarez, eventually will leave. ठीक है? वाओ, लाइक अ गैब्रियल जेसूस बेसिकली. Yeah. So Alvarez basically, I think, obviously he has that talent, and he wanted to learn from the best, basically, Pep Guardiola at this point of time. So that's why he has went over there. I think even Alvarez knows that once Haaland was signed, he was just going to be a squad player. He might play in non-efficient matches, in Champions League, or in Carabao, or might even start the FA Cup, where Haaland is being rested because Haaland का थोड़ा knee का issue है. Haaland का थोड़ा knee का issue है. So that's it. I think he will eventually move, just like Jesus moved, and that's what I feel about Alvarez. Okay, मतलब that's a thought again. मतलब just to kind of again touch upon this, the fact कि यार Pep is open to let Bernardo go at the right price. अगर basically if Bernardo wants, is a clear fact that he is confident on his backup players. और लेकिन उनके इतने number of players है नहीं. तो I think yes, it's a thin line. I think Liverpool and City, Chelsea are probably best, in terms of इसमें यार बता सकते हैं that injuries can actually ruin an entire season. और वो हुआ है चेल्सी के लास्ट सीजन में, लिवरपूल का द सीजन बिफोर. तो यस, हालैंड इज सुपर्ब एंड आई नो अल्वारेज देयर, बट अगेन अगर बाय चांस अगर फर्स्ट टीम में इंजर हो जाते हैं, इफ बर्नार्डो लीव्स, आई थिंक अभी भी थोड़ा सा थिन है. बट व्हाट अबाउट द लेफ्ट बैक? यस, सर्जियो गोमेज हैज कम. नितेश बोल रहा है आई होप ही स्टार्ट्स. मैं कैंसेलो के ऊपर तो शायद ही शुरू करे यार भाई. मतलब ही इज अ राइट फुटेड विंगर यार, लेफ्ट विंगर नहीं. Cancelo के ऊपर, how you think Sergio Gomez is going to start is out of my mind, to be very honest. Like he is going to play that Zinchenko role. He will get games here and there where Cancelo needs to be rested. Simple. And it's not like the end of the season. अभी तो सीजन शुरू है भाई. अभी अभी कहाँ से रेस्ट? अभी तो पेप का रूल है तो चालू होता है 18-19 गेम के बाद. यू नो राइट. पेप रूल है बेसिकली स्टार्ट जब किसी को कुछ आइडिया नहीं होता है कि भाई कौन खेलेगा. अब पहला गेम खिलाया उसको, ग्रिलिश को, दूसरे में ड्रॉप कर दिया, 40 मिनट पे ले आया. फोर्डन या मारेज एंड फोर्डन प्लेड या मेरा वो ये ना. और रादर मुझे लगता है पेप हैज सीन माय एफपीएल टीम यार. मतलब जब भी मैं लाता हूँ ना ग्रिलिश को ड्रॉप कर देता है. आई डोंट नो व्हाटएवर. लेकिन टॉकिंग अबाउट एफपीएल पीपल, यस आई नो पीपल आर पूछ रहे थे इन द चैट भाई एफपीएल डेडलाइन कब है. अगेन वी आर जस्ट इन थर्सडे नाइट राइट नाउ. तो सैटरडे अर्ली किक ऑफ है इस बार. तो सैटरडे नूनिश hopefully we'll do a deadline stream if my health is fine, which is better now. If Haaland starts pressing the centre backs just like he showed flashes in his West Ham, that'll be mad. मतलब the way Newcastle play as well, मतलब मैं बोलता हूँ यार, it is not an easy game to break Newcastle's defense. Last match I know it was Brighton, लेकिन I think again Anshumaan is best to say because Brighton का भी आपने देखा था यार. जो Brighton का forward line है, they create a lot of chances, लेकिन They always do that. exactly. They have, when you look at the XG, उनके गेम्स का उठा के देखो लास्ट सीजन, उसके भी पहले, they create a lot. It's just उनके पास कोई बंदा नहीं है जो फिनिश कर सके. That's where they struggle. So राइट. अगेन यार दिस इज एब्सोल्युटली अ पॉइंट यार. फॉल्स लाइन में पूरा लीग जीत लिया है, लेकिन वो ये ना एवरीडे इज नॉट अ संडे वाली बात हो जाती है. मतलब डूइंग दैट सीजन आफ्टर सीजन आई माइट नॉट सी, बट अगेन हालैंड इज देयर, सो व्हाई आर वी इवन टॉकिंग अबाउट इंजरी राइट नाउ? Pep knows Haaland plays at least 25 game injury prone guy, and I think Alvarez plays most 7. Okay, fair enough. Early on the season Pep won't rotate much. He usually rotates in the busier months, October to February, and especially it being a World Cup year. That's a great point, Manav, as always. यहाँ पर अगेन हमने काफी डिस्कस कर लिया मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में. विल कम बैक टू इट वंस वी हैव टाइम, अगर है तो लास्ट में. इवन चेल्सी फैंस, अगर चेल्सी फैंस हो तो भाई आप, हमने काफी डिस्कस किया चेल्सी के बारे में भी. विल कम बैक टू इट. अगर सिटी में सिर्फ रॉड्री, वॉकर एंड एडिसन आर द ओनली एफपीएल प्लेयर्स टू सेलेक्ट. वुड यू गो विद दैट? यहाँ पर यार मैं सोच रहा था बर्नार्डो सिल्वा रहेगा, लेकिन वो ये बर्नार्डो सिल्वा अभी जा रहा है नहीं जा रहा वाला सीन हो रहा है. गुंडोगन, वुड यू पिक? whether he is, week in week out वाला प्लेयर उस तरीके से खेलता है या नहीं. Now that you लेकिन have गुंडोगन इज दैट काइंड ऑफ ना. मतलब एक रहता है तो ही कंटिन्यूज इन द पास्ट आल्सो. जब उसका फॉर्म रहा है ही कंटिन्यूज विद गुंडोगन, नहीं? मैं बोल रहा हूँ ना कि दोनों के बीच में चेंज करता रहेगा वो. गुंडोगन, some games सिल्वा, फिर गुंडोगन. So यस बिल्कुल. मतलब अगेन मैं तो अल्वारेज को देखना चाहूंगा यार. मतलब लेकिन द फैक्ट इज
Are these the kind of games जहां पर Alvarez will be tried? Let's see. मतलब it depends on Pep कि what is the level of confidence whether he'll try Alvarez. Haaland, the fact is injury prone है, तो थोड़ा सा गेम्स मैनेजमेंट होना पड़ेगा यार, करना पड़ेगा सिटी को। और हो सकता है मतलब द थिंग्स वे थिंग्स आर गोइंग, फार्मर्स लीग यार अर्ली लीड ले ले और फिर हालैंड को रेस्ट कराए, मतलब यू नेवर नो। एज मच एज Alvarez आल्सो ब्रिलियंट ऑन मेरिट, लेकिन वही है हालैंड स्टार्ट्स राइट नाउ एब्सोल्युटली। वेन रोनी ऑन, चलो ये आएंगे वापस इस पर। Gundogan has been made the club captain. We may see him starting a lot this season. बिल्कुल बिल्कुल, that's a great point as well, मानव। तो यार people come on, it's Newcastle versus Man City. Newcastle is coming with a draw, लेकिन of course City are coming with back-to-back wins. Only team along with Arsenal to win both the games. तो क्या लगता है will be the difference maker and what will be the score line? हो जाए predictions in the chat. क्या बोलते हो अंशुमन? Newcastle, Man City. 3-0 City. 3-0 City. Wow. मतलब I still feel that it won't be easy to break Newcastle as much as they Yeah, have it's that just talent. when you play a team like Newcastle, play a team like defensively. So basically, once you crack that code once, like once the first goal is scored, after that anything could happen. So it's just about the first goal. Bournemouth came against me, Bournemouth tried for the first few minutes. They somehow kept City out. But once that first goal went in, boom, 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 it was over before they could even blink. So यार और एक चीज पीपल डोंट टॉक अबाउट मच, राइट? सिटी की डिफेंस, मतलब डिफेंस आल्सो सो गुड, दैट्स द होल पॉइंट, दैट एक yeah, अंडरस्टैंडिंग बन गई है वहां पर। इसलिए मैं बोलता हूँ कैंसेलो स्टार्टिंग अगेन एंड नेथन आकी, आई हैव टू गिव दैट गाय यार, मतलब द गाय इज एक्चुअली स्टार्टेड वेल दिस सीजन। द फाइव स्टार इज ऑल्सो a blessing for us. No team in Premier League has depth. Yeah, in terms of quality, I definitely understand भाई, in terms of quality मतलब प्रॉपर आप अपग्रेड कर रहे हो ऑलमोस्ट एट टाइम्स, that is what is happening in City. But again, I would go with Newcastle. This is one of those games. I think Newcastle this season will be up for these kind of games क्योंकि यार उन्हें दिखाना है can they be in the big league or not. I know it's easy to say, लेकिन at St James's Park I think they might just able to score one goal, लेकिन City 3 गोल मार लेगी। I also feel that because of the one goal open up हो जाएंगे second half में, and I think it'll be a 3-1 victory for City is what I'm saying. Newcastle give good challenge but City win 3-0। सब लोग बोले 2-0 या 3-0 या 3-1 यार। चलो दैट इज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड। क्विकली और मैचेस पर भी आ जाते हैं यहाँ पर। एज आई सेड देयर आर लॉट ऑफ मैचेस, ऑफ कोर्स टॉटनम भाई, थोड़ा सा टॉटनम के बारे में बात कर सकते हैं क्विकली। यस वी हैव स्पोकन अबाउट इट इनफ, लेकिन टॉटनम आर प्लेइंग वुल्व्स। वुल्व्स इतने को साइन कर रहे हैं अंशुमन, बट डू यू थिंक दैट वुल्व्स का जो डिफेंस जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वहां पर लूजिंग कॉर्नर कोडी एंड आई थिंक इफ लूजिंग साइज can be a problem for Wolves this season? apart from losing the defense, they don't have anyone who can score them like 15 goals of them. Jimenez is not playing. तो गोल कहाँ से आएगा भाई तुम्हारे लिए? You have basically changed your entire structure. जो बंदे 3 at the back खेलने वाले थे, अब भाई तुम Tillman को खिला रहे हो 2 at the back में. It is. I think I fear the worst for Wolves in this game. A frustrated Conte with the likes of Son and Kane and Kulusevski. How much time they can hold on. I don't think they are going to score. They might do once like with a wonder goal or with a deflection, but I think Spurs easily scoring 3. Because they are changing a lot. They are changing a lot. Let's see, मतलब again, मतलब I get your point about Spurs, being wounded animals. लेकिन हाँ, this is a great point. Romero is out, तो Spurs का defense जो एक problem था without Romero last season at times, looks like him being out is not good news at all. Yes, I know Wolves are crazy number of signings कर रहे हैं भाई, just like a Nottingham Forest as well. लेकिन if I'm not wrong, Longley भी out है, तो उनका आई थिंक सैंचेज कम्स इन, प्रीटी श्योर सैंचेज विल कम इन एंड लॉन्गले एंड रोमेरो आउट। तो फॉर एफपीएल मैनेजर्स भाई अगर आप करना चाह रहे हो तो आई डोंट सी लाइक, अंशुमन ने बहुत बढ़िया पॉइंट बोला कि वुल्व्स दे डोंट स्कोर इनफ गोल्स, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो अगर आप लेना चाह रहे हो तो आई थिंक यू कैन गो, कंसिडरिंग ये एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इंजरी लग रहा है भाई रोमेरो और लॉन्गले का, दे माइट नॉट कम बैक अंटिल व्हाट 2-3 वीक्स फ्रॉम नाउ। तो लुक्स लाइक यू माइट जस्ट गो फॉर सैंचेज अगर आपको जाना है तो आई थिंक। बट अगेन रीसेंट मीटिंग से बात करें तो आई थिंक नॉट रॉन्ग Spurs have got the better of Wolves, no two ways about it. लेकिन हाँ, I think Spurs के स्टेडियम में एक बार Wolves जीती है in the last 5 games, so they have something to catch on to. लेकिन like I said, season so far में I think Wolves एक भी अभी तक जीती नहीं है, that's the main problem. और मुझे लग रहा है ना Wolves can almost do a Southampton at times because
उनका जो मेन गाय था कॉर्नर कोडी होता ना, हाँ, ही इज नॉट अ लाइक टेरिफिक डिफेंडर, ही इज नॉट लाइक अ जॉन टेरी, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन इन द 5 मैन डिफेंस ना वो एक कमांड करता था, ही यूज्ड टू बी द वॉइस ऑन द पिच, और वो शायद मिस होगा इस बार। आई एम वेरी सरप्राइज यार, आई नो दैट एज इज नॉट ऑन द साइड, लेकिन गोइंग टू एवर्टन ऑन लोन इज वेरी सरप्राइजिंग मेरे लिए। And Mana बोल रहे, my game of the week has to be Wolves versus Spurs. Hype for it. Two teams with great intensity. Wolves lacking the finisher up top, but we are going to see a gritty game, 1-0 to Tottenham. Okay. Again, I can see as much as Eth Nouri बहुत ज्यादा hyped है, I can see Kulusevski ले लेगा उसका, अच्छे तरह से ले लेगा। I genuinely feel that is क्योंकि चेल्सी में कुलीबाली था, he couldn't really deal with it. लेकिन यहाँ पर I think he'll probably do that. Yeah, बिल्कुल। इनसे वो किससे एक्सपेक्ट करो, वही है ना, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू डोंट नो हु इज गोइंग टू बी योर आउटलेट, you know, who can give you like 10-15 goals without Jimenez. बिल्कुल बिल्कुल They यार, like ये ये मैथेउस नूनेज इज नॉट अ फॉरवर्ड यार, ही इज एट सेंट्रल मिडफील्डर, तो क्या तो कर लेगा, मतलब ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, ऑफ कोर्स पेप रियली रेट्स हिम बाय द वे, अब लेकिन दे नीड फिनिशर्स, दे नीड पीपल स्कोर गोल्स, और वही रही है वुल्स की प्रॉब्लम। तो अगेन प्रेडिक्शन की बात करें तो आई एम गोइंग फॉर अ 2-0 स्पर्स विक्ट्री। It's going to be an easy victory for Spurs, and Conte, like we know, like high scoring matches कम होते हैं Conte के साथ, so I'm going with a 2-0 victory to Spurs यहाँ पे। Of course there are other games as well if I'm not wrong, let me just see और कौन से गेम के quickly ले लेते हैं predictions। People, Arsenal, मैं Arsenal के बारे में बात करना, लोग बोलेंगे भाई ऑलमोस्ट टॉप ऑफ द टेबल है, अब आर्सेनल को कैसे यू नो अवॉइड कर सकते हो। अंशुमान क्या लग रहा है आर्सेनल का, मतलब इज इट अ ब्लिप, जैसे हम स्पर्स के बारे में बोल रहे हैं hyped after one match, do you think the same of Arsenal, or do you think Arsenal ने actually किया है? मैं आर्सेनल के लिए एक ही चीज बोलता हूँ, विथ आर्टेटा आई एम ऑलवेज श्योर दे आर नॉट गोइंग टू प्ले चैंपियंस लीग। मैं यही बोलता हूँ बस, गिव दिस स्क्वाड टू एनीवन एल्स, you know, and they will few more additions and they will make them challenge for the title. You know, with Arteta there is a limitation. You know, as a manager he has limitation. They have two good games, that's fine. You know, he did really well last time around as well. And before this season, I said that, you know, they will be around the fourth or fifth spot again. You know, but for that they need a bit of luck. They need Spurs and Chelsea to go down like, you know, badly. You know, unexpected result. So because at this point of time, I don't think United finishing into top four unless or until something, you know, miraculous happens with the signings. You know, with this squad they are not going to do it. In 2 weeks' time, all of a sudden you have like 3-4 new signings, and things might change. But yeah, Arteta, I think, you know, has certain limitations. The squad is really good now. You know, you look at Jesus is very young. You know, it's very flamboyant. They can do the job, but you know, and अब they have अगेन यार ना बोर्नमथ के साथ है, तो आई डोंट थिंक इट बी टेस्टेड एज मच, बट अगेन आप इजी भी नहीं ले सकते बिकॉज इट्स एट बोर्नमथ, और स्कॉट पार्कर इज द नेक्स्ट चेल्सी प्लेयर एज वेल एज अ स्पर्स प्लेयर, तो रिमेंबर दैट आर्सेनल फैंस, तो वहां पर थोड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट आ सकता है। एंड क्विकली देखिए भाई, आई अंडरस्टैंड अबाउट आर्सेनल डेफिनेटली, यू नो, गेटिंग ऑल द हाइप, लेकिन कमिंग डाउन टू द स्क्वाड आई स्टिल फील दे आर इन इंजरी अवे फ्रॉम, यू नो, एज इन वही प्रॉब्लम yeah, इन फ्रंट लाइन, क्योंकि यार right. अगर गैब्रियल जेसुस को, आई नो एवरी प्लेयर का आप बोल सकते हो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, यू नो, एवरीवन टू बी फिट, लेकिन वही है आपके बैकअप, लाइक व्हाई इज मैन सिटी, व्हाई इज लिवरपूल देयर, बिकॉज उनके जो बैकअप्स आर फाइटिंग फॉर दैट, यू नो, फर्स्ट यू नो टीम एज वेल, तो वहां पर आर्सेनल का इतना नहीं दिख रहा है, तो दैट इज द ओनली थिंग। बट अंशुमान यहाँ पे पूछता हूँ ना, पीपल इन द चैट, आप लोग भी बोलिए, डू यू थिंक पेड्रो नेटो अगर मिलता है आर्सेनल को वर्सेस अ टीलेमंस, आई नो दे आर लिंक्ड विद बोथ द प्लेयर्स along with a couple others, लेकिन क्या लगता है, मतलब which is the player जो ज्यादा चाहिए उन्हें? See, Tillemans, they were after Tillemans in the very first 2 weeks. Like after that, just totally backed away. Okay, totally backed away, and makes sense. You know, Tillemans को किसकी जगह पे खिलाएंगे वो? You know, it's not like he has CDM. हाँ, he's not a CDM, he's probably going to play, I think वही है, जाका is playing well, लेकिन जाका के अगेंस्ट वो हो सकता था, लेकिन वही जाका थोड़ा सा ज्यादा एक कैरेक्टर भी लाता है, तो that is also required at times, Yeah. तो you can और आप, you know, then you also have, you know, अभी लोकोंगा को फिर हटाना पड़ेगा. You know, you also have someone like पार्टे भी Lokonga खेल over. रहा है, पार्टे का आई डोंट Partey थिंक। is over. So 26 million for me would be a waste. Like, but then Neto के लिए 80 million quote कर रहे हैं, so I don't think they are going to pay for Neto anyway. You know, both मतलब supporting आफ्टर like पेपे तो वापस से नहीं होने वाला, एक और एक सीन।
वो तो पक्की बात, लेकिन नेटो अच्छा बंदा है, लेकिन वही इंजरी प्रोन एंड देन यू पे सो मच। प्लस आपके साइड लेफ्ट साइड में इज बेटर देन राइट साइड, तो लेफ्ट साइड में दे ऑलरेडी हैव एन ईएसआर और मार्टिनेली। मार्टिनेली भाई पीपल एफपीएल यार, आई थिंक इज द मोस्ट पिक्ड प्लेयर इन दिस वीक यार, सब लोग ने ले लिया है मार्टिनेली को, तो भाई उसका वैल्यू बढ़ने वाला है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ईएसआर आल्सो कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी। 6.1 से is already at 6.3 now. वाओ इंटरेस्टिंग। तो चलो बोर्नमथ आर्सेनल भाई, प्रेडिक्शंस एवरीवन इन द चैट, बोर्नमथ वर्सेस आर्सेनल क्या लग रहा है? मतलब आई स्टिल फील बोर्नमथ गेटिंग दैट फर्स्ट विक्ट्री जो था अगेंस्ट एस्टन विला वाजंट एक सरप्राइज। बोर्नमथ आर डॉग्ड ऑन द डे, लेकिन मैन सिटी के साथ कैन यू जज देम? नॉट रियली। तो आई वुड से आर्सेनल को थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन वही है, गैब्रियल जीसस भी फॉर्म में है, तो कांट गो अगेंस्ट आर्सेनल, राइट अंशुमन? 3-1 Arsenal. 3-1 आर्सेनल, यस So आई their थिंक आई कैन बाय when you दैट। look at the defense of Bournemouth, they are not going to hold up for such a long time. The amount of ball that Arsenal will have and the creativity they have with the likes of Saka, Martinelli, Jesus, Odegaard. So I think they will do their job. They might just, with Arsenal, there is always a defensive mistake. So they might concede one, might not even, but I think they will easily score like 2 to 3 goals. ओके ओके, सब लोग चैट में क्या बोल रहे हैं भाई? बोल दीजिए बोर्नमouth वर्सेस आर्सेनल। और यस, उससे याद आता है भाई, इफ यू आर अ मेंबर ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, सो देयर इज अ प्रेडिक्शन लीग एज वेल, तो मैं प्रेडिक्शन लीग अपडेट करने वाला हूँ, क्या है उसका बेसिकली रैंकिंग। एंड यस, आप अगर हमारे 50 मेंबर्स हो जाते हैं इस साल, विच इज व्हाट दिस ईयर टारगेट इज मिनिमम, तो भाई वी विल बी रादर यू विल बी एलिजिबल फॉर अ प्राइज। अभी के लिए एज द लास्ट अपडेट होता भाई, मानव अभी तक लीड कर रहे हैं प्रेडिक्शन लीग, तो मानव इज अप फॉर अ प्राइज, लेकिन इज जस्ट व्हाट 2 गेम्स इनटू द सीजन। हाँ, यू कैन स्टिल ज्वाइन, अगर आप मेंबर बनते हो इवन इन मिड सीजन, यू कैन स्टिल ज्वाइन, बिकॉज हम उसमें ऐड करेंगे यूसीएल प्रेडिक्शंस भी, और हम करेंगे एवरेज स्कोर। तो आपको मिलेगा एक मैसेज एवरी गेम डे मॉर्निंग, तो एवरी सैटरडे मॉर्निंग को आपको एक मैसेज मिलेगा, कम्युनिटी पोस्ट फ्रॉम मी फॉर द मेंबर्स। बट फॉर पीपल हु आर नॉट मेंबर्स, वी डू हैव एन एफपीएल एज वेल, एफपीएल लिंक है नीचे। अगेन मैं बोल रहा हूँ भाई, मेरा एफपीएल स्कोर खाली 100 है अभी ज्यादा नहीं है, तो आप ब्रैगिंग राइट समझ लो, या प्राइस के लिए भी आप दावेदार हो सकते हो, बिकॉज 2 ही हफ्ते गए अभी तक, यू कैन स्टिल स्कोर लॉट ऑफ पॉइंट्स, डू जॉइन आवर एफपीएल एज वेल। एंड आई एम प्रीटी श्योर अंशुमन का भी है। अंशुमन हो सके तो आप मैसेज कर दीजिए यार चैट में, या मुझे दे दीजिए कोड, तो मैं वापस से कर देता हूँ, सो पीपल यू कैन जॉइन द यूनाइटेड रोड की basically. But anyway, and do not forget to subscribe to not only our channels but Anshuman channels as well. And yes, there are other games as well. Quickly, हाँ, technically if I'm not wrong, एक London derby भी है, if I'm not wrong, that is Brentford Fulham है शायद, right? Which is going to be fun watching. दोनों ही teams kind of looking good, लेकिन again Mitrovic having like थोड़ा poles apart वाले weeks, so let's be interested, waiting for that कि क्या मिलने को दिखेगा। फुलम ब्रेंटफोर्ड है रादर, और एवर्टन नॉटिंघम फॉरेस्ट। एवर्टन का क्या लग रहा है यार? मतलब हम एंथनी गॉर्डन के लिए जा रहे हैं, डू यू सी एंथनी गॉर्डन बीइंग दैट प्लेयर, मतलब हु कैन अप आवर मिडफील्ड गेम? मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों जा रहा है, मतलब व्हाई यू वांट टू पे 50 मिलियन एंथनी गॉर्डन, किसकी जगह खिलाओगे उसको? बैकअप पे अगर बैकअप के लिए जा रहे हो तो व्हाई मेक्स नो सेंस, लाइक 50-55 मिलियन देने का एंथनी गॉर्डन के लिए मेक्स नो सेंस। नो सेंस क्या? लेकिन जनरली व्हाट एवर्टन, मतलब आप देख रहे हो, मतलब फ्रैंक लैम्पार्ड इज एबल टू कीप द प्लेयर्स टुगेदर, एंड मतलब आई नो दैट दे डिडंट हैव ग्रेट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, लेकिन दे आर आल्सो हैविंग लॉट ऑफ इंजरीज, राइट? इंजरीज है, कुछ कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं है बेसिकली, मतलब क्या खिलाना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, कोई सेंस ही नहीं है गेम प्ले में, है ना? यू आर गोइंग विथ अ फ्रंट थ्री ऑफ गॉर्डन एंड मकनील एंड डेमारी ग्रे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कि भाई ऑल ऑफ अ सडन उनमें फ्लूइडिटी आ जाएगी एंड दे विल स्कोर लाइक व्हाट 3-4 गोल्स, Yeah, they मतलब need इफ goal यू scorers. यू ऑब्वियसली इससे बढ़िया भाई रोंडोन खिला लो, एटलीस्ट ही विल बी अ मेनेस फॉर द गाइज हु इज डिफेंडिंग देम, he can bring out like a defender or two with him, he can bully them. उसके बाद तुम्हारा गॉर्डन एंड मकनील, they can put the crosses in for someone like him, even Demari Gray and Gordon, someone like him. बट उसके हम्म। अलावा ना तुम 3 बंदे क्या कर रहे हो? डेमारी ग्रे कैन नॉट फिनिश, वो ऊपर ऊपर से मार दे, लॉन्ग रेंज अगर चले जाए तो चले जाए। मकनील साल में 1 गोल मार दे तो वो बहुत बड़ी बात है उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, सो अंशुमान इज नॉट ऑन एवर्टन साइड क्लियरली, और मुझे भी लगता है देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, लेकिन वही है, देयर आर सर्टेन साइड जो जस्ट एस्केप कर जाएगी, वो है एवर्टन, बिकॉज
मतलब at the end of the day they have that, you know, that backing of the fans. हाँ, they can go bad, लेकिन Frank Lampard I feel that they might just back him compared to Benitez. और वो लग रहा है मुझे होम में basically they have to basically cash in. और इस weekend home against Nottingham Forest, I know Nottingham Forest made crazy number of signings, लेकिन अगेन आप अगर फॉर्म की बात करो तो एवर्टन का तो काफी बुरा फॉर्म है, लेकिन आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट you can argue that, you know, they are in better form absolutely. By West Ham, they beat West Ham, right? मतलब that performance was great. I know West Ham ने एक penalty miss किया था from what I remember last week in अंशुमन, लेकिन West Ham are playing Brighton. अब West Ham इतना ज्यादा हमने hype किया था, सब लोग ने किया था. They've got in Cornet, they've got in basically इतने सारे players, you know, अनगिनत स्कमासा, they've got in मतलब इतने सारे players को रखा भी है. They have not you know, let go Declan Rice for example. The expectations of West Ham was कि भाई they are again going to be challenging for that Conference League spot. I know it's just 2 games. What is missing in West Ham? एंटनी को फालतू खिलाना है अभी. He's like a baggage at this point of time. ठीक है, and plus even if you'll have, you know, you have to give Cornet a chance, direct runner, you know, and can chip in with the goals. So he basically a two-dimensional player, you can say. So हाँ, you मतलब have to, corner can play as a winger as well as a forward. yeah. So you have to get Skamaka into the game, you know. मतलब तुम उसको एंटोनियो कब से, तक, हाँ वही, आई एग्री विद यू, बहुत ज्यादा रिलायंस ऑन एंटोनियो, आई नो दैट, लेकिन yeah. ऑल्सो थोड़े स्टोरीज है ना अबाउट, आई थिंक यू नो दे आर हैविंग लॉट ऑफ प्लेयर्स लिंक्ड आल्सो टू अदर क्लब्स. हो सकता है थोड़ा सा अनसर्टेनिटी हो अंटिल, यू नो, द ट्रांसफर विंडो क्लोजेस. दैट इज ऑलवेज देयर विद वेस्ट हैम, बिकॉज वही है, मतलब टॉप 6 क्लब्स से लेना प्लेयर्स इज नॉट सो इजी, बट अगेन नेक्स्ट कम्स योर वेस्ट हैम टू द वर्ल्ड, लेस्टर टू द वर्ल्ड, राइट? मतलब वहां पर दे हैव टू कीप द प्लेयर्स, बट वेस्ट हैम ब्राइटन विल बी अ ब्रिलियंट गेम मेरे ख्याल से. मतलब आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर टू द गेम इटसेल्फ, क्योंकि यार मतलब अगेन you have West Ham में potentially star players and Brighton में they like to play football. So I'm really looking forward to it. A high scoring game hopefully. But what about other leagues यार? अंशुमन देखा था last weekend सेरिया, भाई सेरिया mad है यार सच में. मैं बोल रहा हूँ वापस से सेरिया will be the, you know, proper season होगा इस बार. बहुत ही close होने वाला है, high scoring होने वाला है. Lot of अभी transfers बाकी है. मारा वो last moment to give Inter a, you know, would turn one into three. So हाँ see, हाँ, I think मतलब that अभी वो इतना पीछे हो चुका है ना in terms of that, you know, high attraction power जिसको बोलते हैं. ठीक है कि मतलब अभी वो उसको वापस से अगर प्रीमियर लीग या फिर ला लीगा को मैच करना है, they will have to spend big. और when you look at the teams, मतलब 3-4 टीम्स के तो फैंस है, चलो ठीक है, their games are, you know, full stadiums are full, but the rest of it, you know, तो जब तुम्हारे स्टेडियम में लोग नहीं है भाई, तुम 100 मिलियन के भी प्लेयर्स लेके आ जाओ और तुम स्टेडियम फिल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर नहीं है कोई मतलब. नो स्पॉन्सर इज गोइंग टू वेस्ट देयर मनी ऑन एम्प्टी स्टेडियम्स. तो वही, अब जहाँ पे 30,000 लोग हैं वहां पे 12-15,000 लोग आ रहे हैं, तो क्या ही बोल सकते हो उसमें. लीग विल बी फाइन, मतलब जो टॉप 4 है फिर से, यू नो, दे विल फाइट. रोमा विल ट्राई टू स्नीक इन इनटू, यू नो, टॉप 4. दे हैव साइंड सम गुड प्लेयर्स, Mourinho like players. So he will definitely try to get in. But yeah, Napoli and the others, you know, Milan clubs and Juventus, these 4 will fight it out. You know, you have Atalanta, so it's not gonna be easy. एटलांटा लूजिंग प्लेयर्स बाय द वे, आई एम सेइंग दैट. यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बाकी लीग्स में इस वीकेंड में, आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड और विलारियल, यू कैन से ऑन पेपर इट्स अ डिसेंट गेम. तो पीपल ये गेम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है संडे नाइट को. तो संडे नाइट को काफी अच्छे गेम्स है भाई. चेल्सी का गेम है, देन एटलेटिको मैड्रिड विलारियल है. मंडे नाइट फुटबॉल है बाय द वे, मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल, जस्ट सो यू रिमेंबर. लेकिन एटलेटिको मैड्रिड ऑल्सो दे हैव, अगर वो रख पाए ना सब प्लेयर्स को, मैं तो बोलता हूँ एटलीस्ट चैलेंज कर सकते. दे हैव अ वेरी गुड स्क्वाड अनलेस डिएगो सिमियोने चेंज करे अपने टैक्टिक्स, और व्हिच इज नाउ वेरी अनलाइकली. नहीं He has one of the most expensive squads in world football at this point of time. He बिल्कुल. just cannot utilize it. मतलब तुमने फीलिक्स को भाई क्या बना दिया है. You know, that guy was some talent. You know, you have Felix, you have Carrasco, you have Griezmann, you have Correa, you have Cunha. मतलब क्या चाहिए भाई तुम्हें. एंड तब भी तुम्हें भाई वही फुटबॉल खेलना है, 3 एट द बैक. ठीक है, काउंटर पे एक गोल मार दिया तो मार दिया, उसके बाद सिट बैक. हम्म. तो क्या बोलते हो पीपल, मतलब एथलेटिको मैड्रिड विलारियल क्या लग रहा है वहां पर? आई थिंक इट विल बी अ गुड गेम टू वॉच. एक और, मतलब इनफैक्ट 2 और अच्छे गेम्स मैं देख रहा हूँ बाकी लीग्स में, एंड दिस इज बेसिकली अगेन संडे नाइट को है, रियल सोसिएडाड और बार्सिलोना. यार आप बोलेंगे रियल सोसिएडाड, लेकिन रियल सोसिएडाड
आई थिंक यार कैन सरप्राइज, सच में दे हैव दैट टीम. तो दिस को बी इंटरेस्टिंग, स्पेशली बार्सिलोना जो 0-0 के बाद आ रही है. या यू कैन आर्ग्यू दैट 0-0 लास्ट टाइम में पेनल्टी मिलना चाहिए था, बट कम ऑन, बार्सिलोना शुड हैव स्कोर्ड लास्ट मैच में. बट रियल सोसिएडाड बार्सिलोना विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. सब लोग बार्सा फैंस स्पेशली बता दीजिए. आई नो दे वर बार्सा फैंस इनिशियली, लेकिन हम बात कर रहे थे प्रीमियर लीग का, तो उस समय वी कुडंट कवर बार्सा, बट होपफुली दिस इज व्हाट इट इज. सो सब लोग लेट मी नो. एंड सेरिया में ऑफ कोर्स एटलांटा, एसी मिलान, अंशुमन ने ऑलरेडी बता दिया है. दिस इज गोइंग टू बी फन गेम फॉर श्योर. और लीगा में है लिल वर्सेस पेरिस सेंट जर्मन. ये है रेनाटो सांचेज डाबी. ये इंटरेस्टिंग रहेगा, स्पेशली देखने को मिलेगा व्हाट इज मिस्टर एम्बापे थिंकिंग यार. मतलब अंशुमन, मतलब यहाँ पे न्यूट्रल व्यू ले अगेन. डू यू थिंक थोड़ा हाइप हो गया ये बंदा? एट द एंड ऑफ द डे व्हाट 20 इयर्स ओल्ड अभी भी. We are talking about Renato Sanchez or एम्बापे 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 okay. जो ignorance from Messi and Neymar, या Mbappe's behavior towards them. No, Mbappe thinks that he is the best player at this point of time. Self-proclaimed best player ever. In a league, even with the likes of where even Lingard would look like, giving you like 15 assists per season. Mm-hmm. You know, so you if you are showing attitude, चलो Wow, नेमार को did we actually hear that? मतलब वही है. Anshuman is like, नहीं, that's the reality of it. That's correct actually. Yeah. yeah, no, so you can show your attitude to some point to Neymar. Mm-hmm. ठीक है, मेसी के हाफ भी अगर उसने अचीवमेंट अपने लाइफ में कर ली ना, ठीक है, तो ही विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर. ठीक है, यू कैन विन अ वर्ल्ड कप बिकॉज यू हैव अ ग्रेट स्क्वाड. ठीक है, फुटबॉल में वर्ल्ड कप जीतना है तो भाई यू हैव अ ग्रेट स्क्वाड. ठीक है, वो वर्ल्ड कप फ्रांस बिना एम्बापे की भी जीत सकती थी. दे हैड सो मच क्वालिटी, और जहां पे ही इज प्लेइंग बेसिकली यू डोंट इवन हैव कंपटीशन. मतलब होता है ना, हर लीग में एटलीस्ट 3-4 टीमें तो है एटलीस्ट जो आपस में फाइट कर रही हैं, नाम के लिए ही सही. इवन इन बुंडेसलीगा एटलीस्ट यू हैव लाइप्जिग हु कैन गिव यू अ शॉक. At least you have Dortmund who can give you a shock at times. Frankfurt is there who can give you a shock at times. La Liga में भी एटलीस्ट 3 टीमें हैं. प्रीमियर लीग की तो चलो बात हटा दो, इवन सीरिया में एटलीस्ट 4-5 टीमें हैं. यहाँ तो जस्ट मतलब घर की खेती बना रखी है पीएसजी ने अपनी. ठीक है, हाउ कम लील वन दैट वाज Farmers League to the core, huh? मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे एम्बापे को जो मन करेगा वो करेगा. So now you have created that monster. तुमने उसको अपना बाप बनाया है क्लब का, तो भाई भुगतना पड़ेगा. बिल्कुल. Imagine someone like Mbappe shouting instructions or making faces at someone like Messi. मतलब ये तो वही वाली बात हो गया कि भाई रोनाल्डो को एडवाइस दे रहा है मगवायर कि भाई ऐसा नहीं, ऐसे करना है. Yep. बिल्कुल. Yes, by the way यार, lot of people have joined us. Hopefully और people भी join करें और they watch it. और कैसे देखेंगे, सब लोग like कर दीजिए stream, because we have literally discussed every league here. We have discussed almost every particular match as well. और I know काफी लोग भाई transfers बात कर रहे हैं, काफी लोग off topic बात कर रहे हैं. And let me remind you, भाई we are monetized. That means that basically अगर आपको करना है prioritize certain chat, भाई you have to super chat, because इतने सारे chats में ले नहीं पाता. लेकिन आई ट्राई एंड टेक एज मच एज पॉसिबल. आपको पता ही है सब लोग को. यस, देयर इज आल्सो मेंबरशिप का आपको डेफिनेटली मिलेंगे पर्क्स, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव अ प्रेडिक्शन लीग. तो मैं कल पब्लिश करूंगा ऑन मेंबरशिप कम्युनिटी पोस्ट. एंड प्लीज मेंबर्स डू पुट इन योर प्रेडिक्शंस. एवरेज स्कोर वीकली जो होगा, ही विल बी द विनर देन, एंड दे विल बी एलिजिबल फॉर प्राइज, जैसे है एफपीएल के लिए भी. और एफपीएल लिंक इज आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. और अंशुमन ने भी किया था, मैंने वापस से डाला है इन द चैट एज वेल. तो यहाँ पर लोग बोल रहे हैं भाई फेब्रिशियो ट्वीट देख लेते भाई, क्या किया भाई, कुछ ब्रेकिंग न्यूज किया है क्या किया है. और सेम चीज वापस से तो गुस्सा करेगा भाई. भाई Casemiro will have a conversation with Carlo Ancelotti in the next hours to discuss his future, as Manchester United contract proposal received yesterday is tempting him. Man United received zero signals on Frankie de Jong's side in the last month. Nothing changed. तो वही है, मतलब that was expected. He next stage of the the offer वही होगा. भैया ये जो है ना, ये आखिरी टाइम तक जो है, इवन बार्सिलोना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे आर प्लेइंग द वेटिंग गेम. ठीक है, क्योंकि नाउ दे एक्टिवेटेड द लिवर एंड दे साइंड द प्लेयर्स, रजिस्टर कर लिया उन्होंने, बट
I think that's नहीं नहीं, the अभी thing. वो जूल्स कुंडे का वेट कर रहे हैं रजिस्टर होने के लिए, एंड देन फिर अलोंजो आएगा उनका भी। अभी यार बहुत लंबा गेम है बार्सिलोना का, तो हाँ, अभी तो अलोंजो भी बैठा है चेल्सी में। और यस, अलोंजो पीपल डोंट पिक हिम इन योर एफपीएल एज वेल, भाई नहीं खेलेगा वो चेल्सी के लिए। बिग लक टू हिम, वो जा रहा है बार्सिलोना 100%, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन अगेन कैसेमिरो का देखते हैं, मतलब नेक्स्ट 48 आवर्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले बिफोर द किक ऑफ, स्पेशली। एंड रिमेंबर, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड लिवरपूल दोनों में है थोड़ा, when this game comes थोड़ा सा न्यूज आता है बिफोर, और मे बी मैनचेस्टर यूनाइटेड टाइमिंग इसके लिए भाई, इट विल बी अ ह्यूज एक बूस्ट हो जाएगा अगर बाय चांस। मैं तो अभी बोलता हूँ आई बी शॉक्ड अगर इफ इट हैपेंस, बट now अगर I'm getting होता है। sure. मतलब ये जो वही है ना कि when as a player you are enticed to a deal, you are just going to talk to your manager because he talked to Perez. उसकी भी न्यूज लोगों ने ब्रेक कर दी, he talked to Perez. Perez told him that he wants to keep him. Obviously Ancelotti also wants to keep him. मतलब he is integral यार, he is integral. That goes without saying. He's integral to them. So unless or until Ancelotti does some magic, I think he's coming in. If Ancelotti says, you what, we need you and all that. So, but वही है कि 5 से 10 million, it's basically a doubling of the money. So that will play a huge role. But let's see. वो जब तक हाथ में पकड़ के खड़ा नहीं होता, जब तक ओल्ड ट्रैफर्ड के बाहर, तब तक तो Yeah. And before ending the stream, I have to basically ask. Yes, I did cover Serie A. I did cover basically a little bit of La Liga as well. तो यहाँ पर La Liga fans आप बोलिए यार, इस weekend मतलब for Barcelona, whom do you think basically starting the game? Because the fact that 0-0 था last time, do you feel that they might go with a different structure this time? They might not play two left footers. Let me know in chat आपको क्या लगता है? There will be some change in the lineup or not? Or yes, of course they are having a big game in my opinion. Real Sociedad is not easy at all. So let's see. Yes, do put in your predictions as well, La Liga fans as well. Fun fact: Jadon Sancho has played under more managers in Man United than he has goals in Premier League. Yes, मैंने पढ़ा था ये. Piyush Bhai in the house, Predator XHD भी यार बढ़िया channel. People do check him out. Thanks for coming on as always. Yes, people, again do not forget to like the stream. काफी लंबा स्ट्रीम है. We literally discussed, हमने शुरू किया था चेल्सी लीड्स के हिस्ट्री के बारे में. We discussed about the injuries. We discussed about we predicted. फिर हम आए मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल ट्रांसफर्स, ऑफ कोर्स जो हो रहा है दोनों क्लब्स में उनके उसके बारे में, ऑफ कोर्स प्रेडिक्टेड 11s में आए. बट वी आल्सो प्रेडिक्टेड लॉट ऑफ न्यूकासल सिटी एंड अदर लीग्स एज वेल. तो भाई सब लोग please like, share and subscribe, or do not forget the United Road. Anshumaan also बढ़िया channel उनका, he knows the stuff inside out. Of course the season has just about started. Towards the end of this deadline day we are also having I think draws for the Champions League and stuff like that. So हम काफी सारा कंटेंट करने वाले. Hopefully Anshuman comes back and probably I go there. A lot of it आप देखेंगे. लेकिन as always, thanks to everyone who's been here. Of course we will be doing hopefully an FPL stream tomorrow as well as कल Who Am I है. Yes, Who Am I का एक quarter final बाकी है. In fact couple of quarter finals are left. So one is सादिक भाई का कल होने वाला है hopefully. So let's see if who wins, if Suraj can challenge सादिक भाई or not. तो ये है कल शाम को 7:30 बजे. Everyone do not forget that. और उतना ही नहीं, we will do an FPL stream before that on Almighty Sports Plus, जहां we are doing madness in FIFA as well. So until next time, take care. But Anshuman, thank you. All the best यार weekend के लिए. And come on भाई Chelsea, जिता दो भाई. अभी we have to get Leeds proper belting चाहिए मुझे. That's what I want. चलो यार, all the best for transfers as well everyone. See you on Almighty Sports Plus soon. Bye everyone.